Are we live? Yes, yes. I guess hi. I hope I'm audible, everyone. Okay, Sandesh, could you help me by telling me if I'm clearly audible? And where would the attendees be putting in their questions, if you could elaborate? On the chat or on the Q&A? So, Sandesh, could you help me by Mohak, you can see the attendees on the. I lost your voice, Sandesh. Mohak. Yes, please. I lost your voice. You're on mute. Mohak, you can see the Yes, attendees please. on YouTube chat. Okay, okay. Can you send me a link here quickly? Possible? Yes, I'll share. I'm going to Dhan. Okay, I should not late. All right. Yes, I. Okay. I think I'm audible to everyone, and I can see a lot of people in the chat finally. Is there some lag by any chance? Okay, fine. So, a very, very, very warm welcome to all of you, and thank you for joining me. My name is Mohak, and I represent QuantInsti. We at QuantInsti do a lot on algorithmic trading. Perfect, perfect. Thank you so much. So there could be a possibility of a few seconds of lag between me speaking and you asking questions and me responding because of the dynamics of YouTube and Zoom and their connection. So having said that, please feel free to ask questions. I would say that in the chat, keep things as relevant as possible. Ask questions clearly. Okay, is there a lot of echo? Is that what is somebody saying? Okay, good morning once again. All right, we can fix that. So let's do one thing. Let many people settle down. I see a lot of people over here.
Let's start in another 2 minutes. Okay. So that everybody is on the same page. And about the echo. Okay, somebody saying no echo. No, I'm not selling any software. My sound is all right, correct? Because anyway, in Zoom you have a, way of suppressing the background echoes, etc. All right, a little bit echo, somebody is saying. Perfect. Okay, so I would want to interact and I see a lot of colors, a lot of people over here. And time and again, because of the way our screens are arranged, I may be coming back to the chat, but there will be times when I will be focused upon the Python codes and other presentation material which I have to share with you. Okay, perfect. Yes, both English as well as Hindi will be used. आप फिक्र मत कीजिए. If there is something which you don't understand, I will be repeating that and I can repeat that in Hindi as well. Because बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं मार्केट्स के कोडिंग के जो इंग्लिश में होते हैं तो एकदम पूरा हिंदी में करना पॉसिबल नहीं है लेकिन it will be a mix of both these things. This will be about 2 hours, including the Q&A time. Okay? So we will learn a lot of things today. That is for sure. No need to worry about that. And without any further ado, let us begin. All right, is everybody ready? Just can you give me a quick thumbs up? My sound is crystal clear. Thank you so much. Okay, perfect. So let me start by sharing my screen at the moment. So I hope all of you can see the presentation on my screen. Okay. So once again, a very, very, very warm welcome to all of you. I am Mohak Pachisia from QuantInsti. Today, we are going to learn about certain things which most people are missing when it comes to algorithmic trading. बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ बेसिक्स नहीं पता, कुछ बिखरा हुआ नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है लेकिन बिखरा हुआ नॉलेज है. So those people who are absolutely freshers, who have no experience with algo trading, this is for you as well. एंड जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मे बी एल्गो ट्रेडिंग का नहीं है और थोड़ा एल्गो ट्रेडिंग का भी है, तो कुछ हिस्सा उसका रिवीजन रहेगा. उसके बाद आपके लिए भी एक सब कुछ नया रहेगा. ठीक है. सो आई विल बी गोइंग बैक टू द यूट्यूब चैट इन ऑर्डर टू सी योर क्वेश्चंस. तो अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है और मैं आंसर नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर दैट यू बी पेशेंट विथ मी. ऑल्सो बहुत सारे मैसेजेस के साथ उस चैट को मत भरिए ताकि मैं पीछे जाके क्वेश्चंस देख सकूं जो रिलेवेंट है. All right. So I think we're all on the same page. Perfect. Let us begin. Before we go ahead, the most important thing is that जो भी मैं इस वेबिनार में कह रहा हूँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है, everything is for educational purpose. Okay, it is not financial advice. Trading has its own risks. It involves a lot of different kinds of variables. And any market participant should consult a qualified financial advisor before making any trading or investing decisions. Okay, so please be sure of that. A quick introduction of myself. My name is Mohak Pachisia, and I am a senior quantitative researcher at QuantInsti. I specialize in trading strategy development, Python-based data modeling, and quantitative research. I am an EPAT alumnus, which is the Executive Program in Algorithmic Trading by QuantInsti itself. And I have cleared all levels of CMT, cleared 2 levels of CFA. I am currently pursuing CQF. A little bit about QuantInsti quickly. So we have multiple platforms. One is a Quantra platform, which is a self-paced learning platform. And we have Blue Shift, which is our automation tool. And also, we have our course EPAT, which is a very holistic course in algorithmic trading. Now, today's agenda. So today's agenda is very, very clear.
First, we start with the very basics of algo trading, a little bit about options trading in the end. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे how these algo systems are actually working. So there are many parts to it. You see, when you have a pill to swallow, a hard pill to swallow, what do? You break that pill. Probably you do that with babies. You break that pill and then you dissolve it in water, and the baby can have that tablet. Similar to that is what we are going to do today. आज हम एक डिफिकल्ट चीज लेंगे और उस डिफिकल्ट चीज को बहुत सारे छोटे फ्रैगमेंट्स में बांटेंगे और हम पीस बाय पीस देख के समझ जाएंगे कि ये पूरा कैसे बनता है. ओके, दैट इज आवर गोल. So we start with the introduction, then we move on to Dhan API basics. So API trading API, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को कुछ नहीं पता है. तो एट अ वेरी बेसिक लेवल एपीआई होता क्या है, धन का एपीआई कैसे काम करता है और धन के अकाउंट के साथ आप उस एपीआई को कैसे कनेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम टिक लेवल डेटा, ये भी बहुत लोगों ने सुना होगा. टिक लेवल डेटा क्या होता है? एक होता है कि चलो यू हैव डेली डेटा विच इज वेरी वेरी कॉमन, विच इज वेरी इजीली अवेलेबल. Then you have minute data also. Then you have 5 minute, 15 minute. वो आप minute data है तो आप 5 minute, 15 minute कुछ भी बना सकते हैं. And then the most interesting thing becomes कि ये tick data है क्या? Tick data means, officially tick data means market के हर पल, हर moment, हर मिली सेकेंड जो भी ट्रेडिंग हो रही है और जो भी स्टेटस है उसका डेटा. That could be for a particular stock, for a commodity, for a future, whatever. Okay? Anything that is being traded. उसके टिक लेवल पर डेटा आता है. अब वो इतना ज्यादा और इतना फुल स्पीड में डेटा आता है दैट योर आईज विल प्रोबब्ली गेट टायर्ड इफ यू ट्राई टू ट्रैक इट. तो हम उसको थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे. और हम, सिंस मार्केट आवर्स अभी है नहीं, तो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है ताकि कैसे देखना है वो हम देख लेंगे. एंड हाउ दैट डेटा कम्स इज समथिंग वी कैन सी वेरी क्लियरली. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू गो इनटू हिस्टोरिकल डेटा. अब ऑब्वियसली इतना डेटा की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में कहीं ये भी आएगा कि हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वेब सॉकेट तो बहुत इजी है. आपको लगेगा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी है, मैं आपको दिखाऊंगा. फिर है हिस्टोरिकल डेटा. तो हिस्टोरिकल डेटा में हमें ऐसे क्या पैरामीटर्स डालने चाहिए, पाइथन में ऐसा क्या काम करना चाहिए कि हमारे पास डेटा आ जाए. तो वो जो डेटा आएगा इट लुक्स वेरी ऑड. उस ऑड डेटा को हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वी विल पुट इट इन अ सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर. तो पाइथन की डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपके पास, सो इट विल बी वेरी गुड. ठीक है. नाउ देन वी हैव हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज इफ यू हैव टू ट्रेड इन ऑप्शंस, वी ऑल नो कि निफ्टी फ्यूचर्स आई कैन सी कुछ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, बट निफ्टी ऑप्शंस में जाऊंगा तो ये वीकली ऑप्शन, ये मंथली ऑप्शन, ये इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, उस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, ये कॉल या फिर ये पुट. देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज I can talk about option, right? I can, like, one option has many many features to it. So when you have so many different options just for one instrument, nifty 50 as the underlying, it is a selection process. क्योंकि आप कुछ भी algorithmically करते हो, you have to select it, right? And then finally we have the entire trading execution. So I'll take a trading strategy example and I'll show you the flow how we can execute. Okay. So this is not, again I'm repeating, this is not market hours, this is not live. So थोड़ा सा gap रहेगा because we will be taking something in minute, because it's not possible to take live data right now. But when these notebooks, so all these notebooks which are the Jupyter notebooks I'll be sharing, when these notebooks are shared, I want you to pay full attention. And next week, by the mid of next week, by Wednesday, we will have all the notebooks in a Quantra course. So Quantra is our platform. We will open up that course for you, and the link will be available in the description of this YouTube video. So you can easily see all the codes. You can run the codes on the cloud itself, as well as you can download those. Okay. So everything will be given to you, nothing to worry about. But right now I want you to pay full attention. Okay.
So before we begin, let me quickly check if there are any questions which are there. Okay. So just 1 second. Okay. All right. All right. Okay. Everybody is ready. No questions as such, I guess. ठीक है. Perfect. Sound is clear. Everything is clear. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Hmm. So, why algo trading? What is algo trading? What is trading itself? Okay. So we know trading kya hai. I'm not getting into that. We all know what is trading, basic. But what is the challenge with trading is the bigger question. In today's world, people who have some experience also have understood this. कि there is some challenge. One is that I have a trading strategy. I have seen कि बार बार वो repeat हो रही है market में. I have seen that happen so consistently कि मुझे conviction हो जाता है कि there will be obvious moves that I will get. There will be obvious moves that I will get. But when those moves are there in the market, it may be possible that I am busy with something. Maybe I'm not paying attention to the market. Maybe that day I'm having a bad day for some other reason and I'm hesitating to take the trade. Okay. So basically, hesitation can be a big problem. There could be a problem that I don't have funds. I might have a small capital and I not be maybe not feeling like taking a risk on a trade because I hesitate a lot. Okay. So there would be different traders with different problems at different times. There could be hesitation. There could be a problem of discipline, as I said. Now, when you have to trade the markets, you should be there live with the markets and spend time on your screen. Okay. Now, this kind of discipline can be achieved only by people who are really into it full time and have the mental and physical capacity to do that. But many times, especially with algo trading, what traders want to do is they want to be disciplined, but वो खुद से discipline नहीं होके automation कर देते हैं. They want to automate the entire process कि वो discipline अपने आप integrate हो जाए. All right. So this discipline and this hesitation, this is an internal emotional problem. The emotional bias is also that come in, right? So मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉफिट में हूँ एंड इट इज कीपिंग ऑन गोइंग अप और ये कभी रुकने वाला नहीं है एंड बिफोर आई नो कि मैंने आधा से ज्यादा प्रॉफिट चलाया था. व्हाई? बिकॉज आई एम बायस्ड. सो बेसिकली देयर इज अ प्रॉब्लम. अगेन स्पीड कैन बी अ प्रॉब्लम. अभी मैंने देखा, अच्छा दिस पैटर्न इज देयर, ओके दिस इज ब्रेकिंग आउट, ओके दिस इज माय इंडिकेटर, दिस इज माय सिग्नल, दिस इज माय स्ट्रेटजी, and before I take the trade the option is moved by 10 rupees for example. So speed is another issue. So the moment I have decided that this is a perfect trade or this is a signal, when I say perfect I mean to say strong signal, I go and I buy or I sell. Before I do that, there are these psychological biases, speed issues. So these are many challenges which traders have faced. And the solution to that is basically algo. So algo trading ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप कर रहे हो उससे अलग है. इट इज जस्ट कि जो आप कर रहे हो उसको और तरीके से करना और ठीक तरीके से करना है. यानी कि जब मैं वीकेंड पे बैठ के मार्केट्स को एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा एनालिसिस करता हूँ. ओके. लेकिन जब मैनुअल ट्रेडिंग में मैं चला जाता हूँ तब मैं मार्केट के अपने लाइव मार्केट के इंट्यूशन पे काम करता हूँ जो मेरे एनालिसिस जैसा तो है बट इट कैन बी स्लाइटली डिफरेंट. ओके. सो our purpose over here, our first lesson over here is कि आप जो भी करो उसको आप सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से करो. When it comes to trading, that would mean that अगर आपको इंट्यूशन है, मुझे एक दिन का इंट्यूशन कोई काम नहीं आने वाला. मुझे तभी काम आने वाला है when I have that intuition
going ahead in the future market data, as the future market data comes in, as market moves in the future, if that finds repeatable value, if there is some repeatable value, there is some predictive value, then there is some scope for making consistent money. One trade one day is not going to help. Okay. So instead of relying completely on my one day, one trade intuition, why cannot not make things rule based? So जब मैं मैनुअल ट्रेडिंग से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे आता हूँ, मैं सबके लिए रूल्स बना देता हूँ। ओके, कि ये है मेरी एनालिसिस, इसको मैंने 10 बार, 100 बार, 1000 बार होते हुए देखा है। ओके, अब ये 1000 बार होते हुए देखा है, विजुअली चार्ट पे देखा है। Is there a way of testing it on Python? Yes, there is a way of testing it on Python. So I will test it. I will test it by taking actual data कि अगर मैंने ये rules आज से 2 साल से या 5 साल से या 10 साल से या 1 साल से लगाए होते इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में और इंट्राडे में फॉर एग्जांपल बाई और सेल किया होता, तो मुझे क्या प्रॉफिट बनता, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता या नहीं बनता। दैट्स इट। सो मैनुअल ट्रेडिंग से हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे आएंगे। एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जब हमने इन रूल्स को ऑटोमेट कर लिया, इसको बोल दिया कि ठीक है, टेस्टिंग हो गई, इंट्यूशन को हमने एक प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, अब टाइम है इसको छोड़ देने का कि ये खुद ब खुद ट्रेड करे। इट शुड ट्रेड ऑटोमेटिकली। ओके, दैट इज व्हाट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज। आई होप एवरीबडी is clear. I hope everybody is clear. Let me just have a quick look at the questions for a second. Okay, I'm hearing some complaints about the sound. Can you just, a few of you just message if everything is okay? Because some people are saying it's okay. Some people are saying there is some problem with the sound. All good? All right, please. Perfect. So if there is some problem with the sound, it may also be possible that there's a problem with your system or speaker. And therefore, I advise you to put some earphones also. Probably change your device. Perfect. So in case there is a problem, feel free to tell me. But if many people tell me, then I will realize there is a problem, because otherwise maybe it's a one-off situation. Okay, now moving. So why does algo trading do fairly well? Okay, I'm not saying manual trading doesn't do well, but I'm saying why does algo trading do fairly well? And one of the reasons is obviously that when you have solved a lot of the problems that are coming from manual trading or that happen to come while executing manual trading, when you've solved those problems, obviously you should be getting better. The first problem is of consistency. So even if I get good signals, I may not be on the screen. ऐसा हो सकता है कि मैं स्क्रीन पे नहीं। So that consistency can only be maintained in such a situation where I'm not sitting in front of the screen all the time, जब चीजें automated हो जाए। So जब automate होगा, then I will be able to take every signals. We all know that trading is not about one trade. Trading is about a series of trades. So in the series of trades, I will have to take a chance in each and every trade. Only then will maybe some of them give me very good profits, some maybe even losses. Okay. That is how trading works. So consistency is a problem which comes from discipline and biases. That is solved. Speed is another problem. Speed with algo trading happens at lightning speed. Again, that is solved. Repeatability. A lot of the things which I have to do manually again and again, that is all given to the code, the program to do it. Okay, so trading programmatically or algorithmically lets it repeat itself without my intervention. Okay. And one more thing is, before algo trading or any trading, I would definitely suggest कि आप कुछ back testing करो। Okay. अगर मेरे पास कोई आइडिया है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा वर्क करती है मार्केट,
that idea is not fully judged unless I put it through real market data. क्योंकि हो सकता है कि विजुअली अगर मैं चार्ट पे कोई चीज देख के आइडिया लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया चार्ट पे, विच मे नॉट गिव मी द फुल पिक्चर इन द लॉन्ग रन। हो सकता है बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे ट्रेड्स हैं जो लूजिंग ट्रेड्स थे, बट मुझे वही ज्यादा दिखाई दे रहा है जो विनिंग ट्रेड है, बिकॉज वो मेरा साइकोलॉजिकल बायस है। मुझे तो एक अच्छा लगता है कि अरे मैं जो सोच रहा हूँ मेरा आइडिया वर्क कर रहा है, इसलिए दैट साइकोलॉजिकल बायस कम्स इन। बट उसी चीज को जब मैं डेटा लेके एक्चुअली टेस्ट करता हूँ, दैट इज द मैसेज हियर, कि अगर आप उसको एक्चुअली टेस्ट करो, तब आपको समझ में आएगा कि वो स्ट्रैटेजी कितनी रोबस्ट है, कितनी पुख्ता है, एंड फिर आप उसको ट्रेड करोगे तो आपका एक और मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दैट इज कि अगर आइडिया फ्लॉड है, अगर आइडिया ही कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपके बैक टेस्ट से वो काफी हद तक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको बैक टेस्ट एक व्यू देता है how clearly you can see things working in the future, because most likely how things were working in the past with the variations of movements in the stock market, similar variations may come in the future, and because of those similar variations the strategy should also perform similarly. I'm not saying it will perform exactly the same, but similarly. ये एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी डीप चीजें आ जाती हैं जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है। बट yes, these are the problems why which are solved by algo, and this is why algo trading does well. All right. So algo trading and quant trading both you may have seen used interchangeably. Okay. So let me just take a look at the questions quickly. Okay, all clear, all good, perfect. Okay, thank you. Hmm. So, as I said, programmatically trade करोगे, algo trading कहा जाता है. Sometimes people call interchangeably use the word quant trading. So the word quantitative trading is whenever you quantify something. This comes under the larger umbrella of quantitative finance, where you have quantitative trading. So basically, wherever we are using data, wherever we are hypothesizing something, wherever we are testing something rigorously, we and seeing the different scenarios, that is quantitative trading. Wherever we are automating things, that is algorithmic trading. That is why they're quite यूज इंटरचेंजेबली, बिकॉज आप कोई चीज को इतना हद तक एनालाइज करोगे और कोडिंग यूज करोगे, पाइथन या कोई और लैंग्वेज यूज करोगे, प्रोग्राम यूज करोगे उसको टेस्ट करने के लिए, फिर आप स्लाइटली डिफरेंट प्रोग्राम यूज करोगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि एक्चुअली मार्केट में जब वो सिग्नल्स आएंगे उसको ट्रेड करने के लिए। तो ये जो पूरा वर्क फ्लो है कैसा होता है, स्टार्टिंग में हम डेटा लेते हैं, डेटा लेते हैं उसके बाद हम इंडिकेटर्स डालते हैं या कोई और पैटर्न मैथमेटिकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स डालते हैं, एंड लॉट कैन बी अदर देन प्राइस आल्सो you can use in the world of AI today. There are many other things also which are used to generate signals, maybe natural language processing, which is NLP. Some hedge funds etc they use that, institutes and hedge funds. Okay, so there could be multiple ways you could generate signals or indicators, and then you find okay fine, this signal has come, now it's time to execute. So at any given point in time you will have data always coming in, and then you generate signal and then you execute. All right. So this is a process, and as the entire process goes on in live markets, you monitor it and you see if there are certain improvements tend to make. So I'll give a small example. Whenever a trader, they have automated a trading system. Okay, few in the next few days they take some learnings कि इसमें थोड़ा सा ये चेंज करना है, ये कोड ऐसे चेंज करना है, ये वैसे करना है, ऐसे करना है, and that will happen when you monitor it a little. Okay, so any trader including yourself, what I would say is पहला message तो है कि you should test everything. Second is, even if you are executing things algorithmically, at that time also in the beginning stages at least one should monitor very clearly, so that they are having a clear understanding कि अभी जो हम आज वर्कफ्लो सीखने वाले हैं और मार्केट में जो होने वाला है और वो जो कनेक्शन है वो कितना क्लियरली कम्युनिकेशन हो रहा है. सो दिस entire communication network is what we are looking at now.
सो डेटा और सिग्नल्स पे हमारा आज मेजर फोकस नहीं है, हमारा मेजर फोकस आज है एग्जीक्यूशन पे। और ओवरऑल वर्क फ्लो हमारा एग्जीक्यूशन पे फिक्स रहेगा। वेयर मेजरली वी विल गेट डेटा। ऐसा नहीं कि हम डेटा नहीं करेंगे, हम डेटा यूज करेंगे। और ये सारा चीज जो हम करेंगे इसमें हम लीड करेंगे अपने आप को एग्जीक्यूशन के लिए। ऑलराइट, सो we'll begin with that. Towards the end, मैं एक सिंपल मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी लेके आपको दिखाऊंगा एक बुल कॉल स्प्रेड या एक बेयर पुट स्प्रेड। हाउ कैन वी हाउ कैन वी execute that kind of a strategy? All right. So there was a small mistake over here, but that can be corrected. Okay. So we will be moving on to the Python files. All right. Moving on to the Python files. So before we do that, just give me a second. Hmm. So I had somebody asking a question. Yes. When the market in a particular signal which we are going to discuss today, okay, in terms of the execution work, ठीक है कि यहाँ से डेटा आ रहे हैं, ये सिग्नल है और हमें एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास निफ्टी का डेटा आ रहा है, ठीक है, एंड माई सिग्नल इज अ बाई सिग्नल। थ्रू द सिस्टम आई गेट अ बाई सिग्नल। इमीडिएटली आई कैन गो एंड निफ्टी बाइट से तो खरीद नहीं सकते आप, आपके तो फ्यूचर्स खरीदना होगा, उसका ऑप्शंस खरीदना होगा, राइट? Some people, if they want to do some investment, they can use Nifty ETFs also. But by and large, futures and options, right? So instead of going long on one lot of futures or going simply long on one call, मैं क्या करूंगा, एक कॉल खरीदूंगा और उसके और ऊपर के स्ट्राइक का कॉल भेज दूंगा। एंड वाइस वर्सा फॉर a fall. If I'm expecting the market to go down, I have a sell signal. Then in my workflow, I will do what is I will create a bear put spread. That means bear means when the market is bearish, it should make money. Put spread, buy the put, we will go with the ATM put and उसके नीचे के strike price का put हम बेच देंगे. Okay. So we will discuss that. That will come later. So this is the end of this presentation. अब हमारा क्लियर फोकस जुपिटर नोटबुक्स यानी कि पाइथन फाइल्स पे ही रहेगा। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड सो फार, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आई एम गिविंग यू 10 seconds or 20 seconds. Please feel free to ask. How much money is required? Yes, today we will be talking a little more on the intraday side. I will show you things. How can we assured how can we be assured or any clarity to grasp whether data provided by the broker is tick-based interval or time-based interval? We'll come to that. You will get more clarity. Very good question. What criteria do you prioritize when deciding whether a strategy should be directional, volatility-based, or neutral? Okay. Thank you so much. Good question. So there are multiple types of strategies, right? So any individual or any firm, they will be focused upon, different things. So for example, individual who feels like the risk they can take is not much, then they will probably be taking strategies which would have very, very fixed losses. They have very well defined losses. A loss cannot go beyond a certain point. So those are the kind of people who would like to explore maybe volatility-based strategies and where there are two legs which are essentially trying to cover a gap.
okay, or maybe mean reverting strategies, etc. Whereas some people who want to take risk could want to explore momentum trading strategies. They'll get better rewards as well, but the risk is slightly higher. Also depend on the time frame. Okay, so there could be HFT traders, which are the high frequency traders, MFT traders, mid frequency traders, or even LFT trading is there. Okay, so what I would suggest is that that is another way of looking at it. The third thing is that you might have a better understanding of a certain type of strategy. Okay, so depending on what is the paradigm we are looking at, from what perspective we are looking at, there could be preference for different things. And now at a firm level, if you're running a firm with a lot of money, then you want to have a variety of strategies because you want a diversified portfolio of strategies. You don't want that all the strategies are of the same type and they end up giving correlated results. You want negatively correlated results among two different strategies. Okay. So overall portfolio performance becomes a bit stable. Okay. One more question is complex strategy, math, and physics required to build a system? No, not at all. I feel like if I can do it, anybody can do it. Okay. Complexity is only as much as complex. चीजें उतनी ही डिफिकल्ट है जितना आपको लगता है वो डिफिकल्ट है. जितना आप अपने आप को रोक कर रख रहे हो कि आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज दिस मे बी डिफिकल्ट, आप एक साल बिता देते हो ये सोचने में कि मैं ये क्यों करूं, ये कब करूं, इनमें से होगा कि नहीं, ये डिफिकल्ट है. बट करने जाओगे तो वो काम एक हफ्ते में हो जाएगा. अग्री और डिसएग्री? ओके. How do you quantify whether a strategy edge is present or merely a backtest noise? Very good question. Although today it is not our focus to focus on the strategy backtesting part, we can leave that for some future webinar. But definitely there are within the backtesting framework, you can have various stress testing, you can have different scenario analysis and different evaluation methods, which will give you an idea how this is. और फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि बैक टेस्ट कर रहा हूं मैं, अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा कोई स्टॉक बैक टेस्ट किया जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है एक साल से, और वो आके मुझे बोलता है कि ये देखिए, ये मैंने बैक टेस्ट किया है, ये एक साल में इतना रिटर्न दिया है, तो मैं उसको बोलूंगा कि तुमने सिर्फ एक साल लिया तो योर डेटा इज ओनली बायस्ड. सो इन मेनी केसेस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज दैट समटाइम्स द डेटा इज ओनली बायस्ड, या आपके पास डेटा ही इतना अच्छा है कि वो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली उस पर काम करती है. तो अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, यू शुड हैव सिग्निफिकेंट डेटा, काफी डेटा होना चाहिए आपके पास. अगर मैं फॉर एग्जांपल इंट्राडे स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर रहा हूँ, सो अ फ्यू इयर्स ऑफ डेटा इज गुड इनफ, राइट? इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. सो एवरी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी बिल्डिंग प्रोसेस फ्रॉम द डेटा टू द एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन कि ये स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग कैसी है, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ सकती है जो उसको बायस कर दे. सो यू हैव टू बी केयरफुल एट एवरी स्टेप ऑफ द वे, एंड दैट इज व्हाई व्हाट यू आस्क्ड वाज वेरी पर्टिनेंट. हम किसी और टाइम पे उसमें डिटेल में जाएंगे. ओके. Can we deploy plain vanilla and naked buy option strategy? 100% you can. Today you will learn how to do that. You can do that. You can experiment this in your own account, Dhan account. Perfect. Okay. Can we deploy? Okay. Certain data, can we identify whether it's spoofing? No, we are not getting into that right now because अभी वो थोड़ा ज्यादा ही डीप है. अभी मेरे को थोड़ा सब ध्यान रखना पड़ेगा that everybody understands what I say. Okay, so I'll try not to go into that point क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा अभी सबके लिए. Okay, and that would be covered when you have very low latency data which only high frequency trading firms have. Okay, so वो हमारे लिए उतना applicable भी नहीं है. Can we create moving average based buy or sell for deep at the money or PE with stop loss in system? 100% you can. We are going to do something close to that today. So stay tuned. Okay, so perfect. I think I have covered a good number of questions. And I think everybody is pretty much okay with the mix of language. कभी मैं थोड़ा हिंदी भी use कर रहा हूँ so that सारे audience को
समझ में आए, और ऐसा भी नहीं हो कि इंग्लिश ना यूज करूँ, क्योंकि मुझे काफी कुछ चीजें समझानी पड़ती है इंग्लिश में। ऑलराइट। No, not today's are not practice. Today is the workflow of execution. Hmm. Perfect. So moving on. Thank you. Okay. Chalo. Thank you. So moving on. Now I'm about to share my screen. Just give me 1 second, please. Hmm. So for today, as I said, I have prepared a number of Jupyter notebooks. Now, most of the notebooks I will not be able to run in front of you, but definitely what I will be doing is I will be showing you हाउ थिंग्स वर्क, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने लास्ट 2-3 दिन में रन किया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सबको पता है दैट you know we have Dhan. All of you are clients of Dhan, and you will be using Dhan API, right? So in the very beginning, how to use Dhan API, that's the most important thing, right? What is Dhan API about? Now, to give you a simple example, you can understand that API is somebody who is, if you go to a restaurant, there's somebody waiting for the in the restaurant, a waiter or a waitress, they comes and takes your order. API is like that. API will come and say, okay, what do you want? They will say, okay, I want this. And then you go into the kitchen and they will order that. Simple. So if I want to use API, वो एक कनेक्शन है मेरे प्रोग्राम और मेरे ब्रोकर के बीच में। एंड यू कैन से कि मेरे प्रोग्राम और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सचेंज के बीच में, बिकॉज द ब्रोकर इज अल्टीमेटली गोइंग टू प्लेस योर ऑर्डर इन द एक्सचेंज। ओके। सो दिस कम्युनिकेशन नीड्स टू बी डन। अब बाय इटसेल्फ अगर आपने कंप्यूटर ऑन करके पाइथन वो कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो बाय इटसेल्फ तो वो होने वाला है नहीं। यू नीड समथिंग टू मेक दैट कनेक्शन। दैट इज व्हाट द एपीआई इज। So the API is basically going to have a lot of nuances. उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, लैंग्वेज बेस्ड चीजें होती है जहाँ पे लोग आके अटकते भी हैं, बट वो लैंग्वेज में ही एपीआई समझ पाता है। ठीक है। तो हमें ये समझ करके चलना है कि पाइथन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में पाइथन वो ही समझ सकता है जो आप उसको समझाते हो, और उसी भाषा में वो समझ सकता है जिस भाषा में आप उसको वो समझना चाहता है। ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स अ लिटिल बिट। तो पाइथन बेसिक्स इज समथिंग विच यू नीड 100%। ओके। सो 100% यू लुक इनटू दैट। वी ऑल्सो हैव क्वांट इंस्टी के क्वांटा प्लेटफॉर्म में पाइथन फॉर ट्रेडिंग का एक कोर्स है which covers basic Python, and it is a free course, so you can check that out. Okay. Python for trading, it's a very beginner friendly free course. So क्वांटा प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। सिमिलरली क्वांटा प्लेटफॉर्म में ये वाले कोड्स भी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे जो आज मैं दिखाऊंगा। ठीक है। सो अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, बहुत लोगों को पता है कि चलो एपीआई के हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीआई इज ओनली अबाउट द प्रोग्रामिंग। उसके पीछे उसको समझने के लिए हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, राइट? जैसे धन का खुद का गिटहब पेज है। ठीक है। और एट द सेम टाइम एक डॉक्यूमेंटेशन है। सो आई जस्ट गिव यू द लिंक, आई जस्ट ओपन द लिंक ओवर हियर ऑफ द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ धन। ठीक है। So I hope everybody can see my screen. So ये धन 2.0 इसका डॉक्यूमेंटेशन है, एंड इट इज गॉट एवरीथिंग कि आप क्या कैसे करोगे। सो अगर आप मेरे कोड के साथ साथ ये डॉक्यूमेंटेशन को भी देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है उसके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो सेम थिंग आई एम ऑल्सो डूइंग, तो यू कैन कोरिलेट दैट। ठीक है। सो बिफोर गेटिंग इन टू दैट, स्टेप वन इज टू फर्स्ट हैव योर धन अकाउंट। So if you have your Dhan account, you can access the client ID and as well as the access token. I hope that is very very clear. ठीक है। सो ये धन अकाउंट तो होना जरूरी है। तो अगर आपके पास धन अकाउंट है, उसके बाद आपको एपीआई के लिए भी या तो फ्री ट्रेडिंग एपीआई आप यूज कर सकते हो,
तो फ्री ट्रेडिंग एपीआई जो है उसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगेंगे, यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब टू इट। बट अगर आप डेटा एपीआई यूज करते हो तो आपका कुछ चार्जेस है इसमें, यू कैन यूज दैट। ठीक है। सो आई एम जस्ट ओपनिंग टू शो यू, आई एम ओपनिंग द धन अकाउंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन showing you how you can play around with this. One second, please. So yeah, this is a example Dhan account. All right. Now over here from the home page you can see, आप जाते हो ट्रेडिंग एपीआईज में, सेकंड धन HQ APIs, यहाँ पर जाके if you want to just if you don't want to subscribe, you can get a trading API for free where you can execute trades। ठीक है। यहाँ पर हमें जाके जनरेट न्यू एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है, तो ये जनरेट आएगा। इसमें आपको एप्लीकेशन नेम डालना है, मैंने ऑलरेडी डाल के एक एक्टिवेट करके रखा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। सो ये क्वांटिस्टी के नाम से है यहाँ पर। इट विल बी वैलिड फॉर 24 आवर्स, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, 24 आवर्स के लिए ही वैलिड रहता है। आप उसको रिवोक के डिलीट कर सकते हैं, बट 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा, एंड देन यू कैन जनरेट द एक्सेस टोकन। फाइन। Once you generate the access token, you will get something like this। यहाँ पर एक्सेस टोकन को आपको कॉपी करना है, तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी जो क्लाइंट आईडी है। क्लाइंट आईडी अगर आपके पास धन अकाउंट है तो आपको पता है, आप अपने प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं क्लाइंट आईडी क्या है। एंड डोंट बी मिस डायरेक्टेड बाय दिस, ये मॉक ट्रेडिंग या कुछ टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू टुडे, ये आज का मार्केट नहीं है। दिस इज अ सैटरडे वी आर हैविंग दिस वेबिनार ऑन, एंड ये यूट्यूब पे भी जो बाद में भी देख रहे हैं, प्लीज नोट दैट दिस इज अ सैटरडे ऑफ मार्केट आवर्स। ओके। सो दिस आई ओपन यू जस्ट टू शो यू द एक्सेस टोकन। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक्सेस टोकन और सब जनरेट हो गया, एंड इन केस यू गोइंग फॉर डेटा एपीआई, सो ट्रेडिंग एपीआई से यू कैन ओनली डू ट्रेडिंग, डेटा एपीआई से यू कैन डू बोथ ट्रेडिंग ऑल्सो, एंड यू कैन पुल इंट्राडे और हिस्टोरिकल डेटा ऑल्सो। सो यहाँ पर डेटा एपीआई का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो जो भी मैंने यहाँ पर एक्सेस टोकन जनरेट किया है, यहाँ पे एपीआई का जो नया ऐप खोला है, दैट इज trade data API also as well as trading API। Okay, I hope this much is clear to you. Now back to the Python code. Now once you have Jupyter Notebook, what happens is that you have to install certain things। मतलब जो पाइथन की लाइब्रेरी है, धन की जो लाइब्रेरी है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 second प्लीज। हाँ जी, दिस इज ओपन्ड। हाँ। सो धन एपीआई 2.1.0, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ और आप ये लोकल मशीन में चला रहे हैं तो प्लीज इस लाइन को अनकमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल और ये क्वेश्चन मार्क वाला कीबोर्ड पे साइन डाल के आप इसको अनकमेंट कर सकते हैं, या सिंपली ये जो हैशटैग है इसको हटा सकते हैं। ठीक है। सो ये आपने कर लिया, तो आपको इसके बाद ये रन करना होगा, यू विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल धन HQ 2.1.0 वर्जन। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो बाकी लाइब्रेरीज भी हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, लेट्स से pandas है, numpy है, डेट टाइम है, मैटप्लॉटलिब है, ये सारे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे, एंड दोज हु विल बी यूजिंग द जुपिटर नोटबुक्स ऑन द क्वांट्रा प्लेटफॉर्म, उसमें भी काफी सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको वापस से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली ये इंपोर्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, हमने इंपोर्ट कर लिया। तो फॉर नेम से pandas हम यूज करते हैं फॉर टैबुलर डेटा, जस्ट टू गिव यू टॉप ऑफ द सरफेस अंडरस्टैंडिंग। numpy हम यूज करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, डेट टाइम हम यूज करते हैं डेट टाइम के लिए, एंड मैटप्लॉटलिब हम यूज करते हैं प्लॉटिंग के लिए। ठीक है। अब क्योंकि हमने धन HQ जो है वो इंस्टॉल भी कर लिया है, अब हम धन HQ को इंपोर्ट करेंगे। तो धन HQ हमने इंपोर्ट किया, और धन HQ के अंदर कुछ सब मॉड्यूल्स हैं, लाइक धन कॉन्टेक्स्ट, धन HQ, मार्केट फीड, ये सारे भी हम इंपोर्ट करेंगे। अभी मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आने वाले नोटबुक्स में मैं इस सेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। ठीक है। सो हमने एक बार इंपोर्ट कर लिया, हमारी काम की चीजें इंपोर्ट हो गई, फिर हम उन चीजों को यूज करेंगे। ऑलराइट। नाउ
पहली बात तो हमने जब धन को इंपोर्ट कर लिया, तो धन कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर लिया, धन एचक्यू भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा टाइम आ गया कि अब ये जो हमारे क्लाइंट और एक्सेस टोकन बना हुआ है, क्लाइंट आईडी है हमारे पास, एक्सेस टोकन हमने जनरेट किया है, ये जो बना है इसको हम यूज करके, वो एक चाबी है, उस चाबी को हम इस ताले में घुसाएंगे और हमारा जो कनेक्शन है वो बन जाएगा। सिंपल। सो उसके लिए ये कोड है। यहाँ पर मैंने ये क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन नहीं लगाई है, सो दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। तो ये एग्जैक्टली exactly ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर आप अपने क्लाइंट आईडी को विद इन दीज टू कोड्स एज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालेंगे। सपोज आपका क्लाइंट आईडी 1 2 3 4 है, तो यू विल टाइप समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये हटा देंगे, दिस विल नॉट बी देयर। ओके, सो क्लाइंट आईडी है वो लगेगा, एंड एक्सेस टोकन भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लगेगा। तो एक्सेस टोकन थोड़ा बड़ा होता है, मैंने कॉपी किया था, तो मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा ऐसे लंबा सा होता है, तो कंट्रोल जी कर रहा हूँ, उसको भी हम स्ट्रिंग में डाल के ऐसे एक्सेस टोकन कर लेंगे। ठीक है, आई होप दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हमने, मैं ये रन कर चुका हूँ, तो क्लाइंट आईडी सेट, एक्सेस टोकन सेट, ये प्रिंट भी कर चुका है। अब नेक्स्ट है कि जो हमने ये वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया, क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन, ये मेरे सिस्टम में अभी स्टोर हो गया है, मेरे पाइथन नोटबुक पे, मेरे स्क्रिप्ट में अभी ये स्टोर हो गया है वेरिएबल। आराम से मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो कुछ भी नहीं करके मैं ये क्या करूँगा, मैं धन कॉन्टेक्स्ट के एक फंक्शन में इसको डाल दूंगा। तो अब ये जो धन कॉन्टेक्स्ट का जो मेथड है, जिससे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, उस कनेक्शन को हम एक नाम दे देंगे। ठीक है, उस कनेक्शन को हमने नाम दे दिया धन। सो ये कुछ भी हो सकता था, ये टॉम क्रूज भी हो सकता है, ये शाहरुख खान भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो धन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, इसका नाम हमने धन दिया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एज ए सेड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने फेवरेट एक्टर का, सिंगर का, कुछ भी। इसके बाद ये जो कोड है, इसको बहुत केयरफुली लगा। तो क्योंकि मैंने क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी में सेव कर लिया था क्लाइंट आईडी, और एक्सेस टोकन में सेव कर लिया था एक्सेस टोकन, मुझे यहाँ पर क्लाइंट आईडी इक्वल्स टू क्लाइंट आईडी, एक्सेस टोकन इक्वल टू एक्सेस टोकन, इतना सा ही लिखना पड़ा, क्योंकि ये जो सेव था ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अब इसके बाद जब मैं ये रन करता हूँ, तो धन क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और मैंने इसको प्रिंट भी कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। अगर ये कोड रन नहीं होता, या मेरे कोडिंग में कुछ सिंटैक्स इश्यूज होते, मैंने कुछ गलत डाल दिया होता, तो क्या होता कि यहाँ पे एक एरर थ्रो करता, तो फिर ये प्रिंट वाले लाइन तक जाता ही नहीं। क्योंकि ये हो गया है, और ये सेव हो गया है, स्टोर हो गया है, ये एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुका है, हमारा धन ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है, तो इसलिए प्रिंट कर दिया कि भाई हो गया है सक्सेसफुली, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हम कुछ भी करेंगे, एज आई सेड देयर आर फ्यू मूविंग पार्ट्स। एक बार मैं क्विकली क्वेश्चंस पे जाता हूँ, जस्ट इन केस आई डोंट मिस आउट एनीथिंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज एवरीबडी विद मी? कैन यू गेट अ क्विक थम्स अप और इमोटिकॉन, लाइक यू नो हाई फाई और थम्स अप, समथिंग लाइक दैट? Okay, just to make sure everybody is following me clearly. Dhan trading API is free. Dhan data API is paid. Trading API can only give you the facility to trade. Okay, but when it comes to data API, you can pull data as well as you can trade. Okay, both the things you can do. Perfect. So I'm getting some thumbs up. So this is good. There is a 1 minute lag or something between what I'm saying and you responding. So वो रहेगा. Don't worry about it. I'm going to keep coming back to the questions. Perfect. All right. Now going back to my notebook. खैर आपको तो मेरा नोटबुक ही दिखाई दे रहा होता है. Now. सो व्हेन द एक्सेस टोकन विल गेट एक्सपायर्ड, हमें एक नया जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने डेटा एपीआई ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, तो वापस वापस आप जनरेट कर सकते हो। आप नहीं भी करके रखा है, तो सिर्फ ट्रेडिंग एपीआई आप वापस जनरेट कर सकते हो। वापस जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो प्रीवियस एक्टिव वन, आप वापस जनरेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक बार में एक यूज कर रहे हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दैट इज वेरी कॉमन, मतलब 24 hours इज द common thing, and this I've seen among across many brokers. ठीक है, so
24 आवर्स तक ये एपीआई एक्टिवेटेड रहेगी, वैलिड रहेगा एक्सेस टोकन इन द सेंस, और उसके बाद आपको एक्सेस टोकन एक्सपायर होने के बाद वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ एज आई सेड देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स। कोई स्ट्रैटेजी है उसके भी मूविंग पार्ट्स होते हैं, और ये जो एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो है ना, इसके तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। पहली बात मुझे समझना होता है कि यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है, अब यहाँ पे ऑर्डर जा रहा है। तो पहले हम आते हैं एकदम रूट पे, डेटा पे आते हैं। अब डेटा आने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा मुझे किसका डेटा चाहिए। अब किसका डेटा चाहिए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज देयर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। ठीक है। तो उसके लिए धन का सिंपल सोल्यूशन है। धन का सिंपल सोल्यूशन है कि भाई आप ये यूआरएल लो, ये इनकी एक सीएसवी फाइल है। ठीक है। सीएसवी फाइल क्या हो गया, एक्सेल जैसा ही होता है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बट तो एक्सेल का एक कजन है, सीएसवी बोलते हैं उसे। और वो सीएसवी फाइल जब आप खोलोगे तो वो बहुत ज्यादा कम्बरसम हो गया, आप शायद ठीक से रीड नहीं कर पाओगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वो सीएसवी फाइल की जो लिंक है वो यूआरएल को हम सेव कर लेते हैं सीएसवी अंडरस्कोर यूआरएल, और फिर हम उसको पैंडास में रीड करते हैं। मैंने क्या कहा, पैंडास मीन्स टैबुलर डेटा। तो मैं क्या पहले कर लिया था, मैंने कर लिया था पैंडास एज पीडी, हमने इंपोर्ट कर लिया था। और पैंडास का एक मेथड पीडी डॉट डेटा फ्रेम, सॉरी पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ये यूज करके हमने इस सीएसवी यूआरएल को यूज किया है। और बिकॉज इसमें नंबर्स और स्ट्रिंग अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, हम बोलते हैं सभी को स्ट्रिंग में ले आओ, हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इंस्ट्रूमेंट्स अंडरस्कोर डीएफ, विच स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स डेटा फ्रेम, इसके अंदर सेव कर लिया। अब मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स अंडरस्कोर डीएफ को थोड़ा देखता हूँ, इसके पहले दो रोज देखता हूँ डॉट हेड करके। और इसका जो शेप है, यानी कि सोच सकते हो आप इतने सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स है, 2,17,000 इंस्ट्रूमेंट्स, एंड 40 रोज 40 कॉलम्स है। तो इतने सारे कॉलम्स भी है, इतने सारे कॉलम्स भी हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा मास्टर फाइल है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। और क्यों सेलेक्ट करना है, बिकॉज हर इंस्ट्रूमेंट की एक यूनिक सिक्योरिटी आईडी है। ऑलराइट। और मैं जब भी कोई डेटा लूंगा, चाहे वेब सॉकेट हो, मिनट डेटा हो, हिस्टोरिकल डेटा हो, व्हाटएवर इट इज, आई विल नीड दैट सिक्योरिटी आईडी। सिंपल। तो मैं सिंपली क्या करने गया, आई विल I have all this data. I have these different columns obviously. So logically आप देख सकते हैं, अगर मैं you know अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर है, अगस्त फ्यूचर्स है। ठीक है। लॉजिकली आप देख सकते हैं इसके साथ एक्सचेंज आईडी है, सेगमेंट है, सिक्योरिटी आईडी है, इंस्ट्रूमेंट है, वगैरह वगैरह। दीज आर वेरी लॉजिकल थिंग्स। ठीक है। यू आर यूज टू इट, और हम इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम एक्सचेंज आईडी पे फोकस करेंगे, हम सिक्योरिटी आईडी पे फोकस करेंगे, सिंबल नेम पे फोकस करेंगे। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट टाइप पे फोकस करेंगे, फ्यूचर्स है या इक्विटी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। एक बार हम इस चीज को समझ लेंगे, इट विल बी वेरी इजी। तो अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे निकालना है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक का डेटा। ओके। डेटा निकालना है, कुछ भी निकालना है, पहले मुझे सिक्योरिटी आईडी निकालना है। तो इस बड़े सारे टेबल से जो हमने इंस्ट्रूमेंट अंडरस्कोर डीएफ बनाया है, उस बड़े सारे टेबल जो है, इसमें लैक्स ऑफ कॉलम्स, डिफरेंट डिफरेंट रोज है, सॉरी, एंड 40 कॉलम्स है। तो देयरफॉर हम सिर्फ निकालना है हमें एल आई सी हाउसिंग। हाउ डू आई डू दैट? तो मैं उसको फिल्टर करूंगा। मैं बोलूंगा इंस्ट्रूमेंट डीएफ में से मुझे वो वाले रोज निकाल के दो जिसमें एक्सचेंज आईडी इज एनएससी। तो मुझे पता है कि मुझे एनएससी का डेटा चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसमें द अंडरलाइंग सिंबल इज एल आई सी हाउसिंग फाइन, बिकॉज आई नो द सिंबल ऑफ दिस स्टॉक, मैंने ये डाल दिया। एंड लास्टली, इंस्ट्रूमेंट टाइप इज ईएस, ईएस इज फॉर इक्विटी। ओके। तो यहाँ पर मुझे इसने ये डॉट एल आई सी डॉट हेड मैंने किया, यानी कि एल आई सी बोल के मैंने एक छोटा सबसेट बनाया डेटा फ्रेम का। ये सारे कैटेगरीज को लो, फिल्टर करो, और मुझे ये दे दो। तो एल आई सी डॉट हेड में सिर्फ एक ही रो है, और वो एक रो में मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। ठीक है। नाउ एवरीबडी, आई नो यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो रहा है, लैग हो रहा है वीडियो एंड उसमें, बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग, राइट? अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सिक्योरिटी आईडी चाहिए, विच इज द यूनिक आईडी। ओके।
क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी इक्विटी बार बार रिपीट होगा। ओके। एल आई सी अंडरलाइन सिंबल में एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस वापस रिपीट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज द सिक्योरिटी आईडी 1997। तो मैं इधर एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो हम आगे देख लेंगे। अभी मैं बस सिंपली ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 1997, ठीक है, 1997। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये ट्रेडिंग एपीआई से हम पहली चीज, एक सिंपल सी चीज जो कर सकते हैं वो है कि एक ऑर्डर को प्लेस करना। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए एक बार हम क्विकली ये धन डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और ये ऑर्डर्स में जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल हैव टू यू नो नॉट डू व्हाट आई हैव डन। मैंने जो किया आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टाइप का। बट ऑर्डर्स जब होते हैं ना, बहुत सारे टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर, सुपर ऑर्डर्स, फॉरवर्ड ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो इट इज बेटर जस्ट टू हैव अ आइडिया ऑफ दिस रेफरेंस। तो आप देखोगे कि मैंने ये रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से मैंने यहाँ पे चीजें डाली। ठीक है। सो इस रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर में यू कैन सी समथिंग्स आर बाय डिफॉल्ट गिवन हियर एज एन एग्जांपल। सो क्लाइंट आईडी तो ये वाला क्लाइंट आईडी नहीं है, मैंने जिस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ कुछ और है, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो आई एम रिप्लेसिंग दोस। एंड इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ चेंजेस ऑल्सो। ये एल्गो ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपके जो कोड है, जिस तरीके के सिंटैक्स से बने हैं उसमें, और जरूरी नहीं कि बहुत बड़े चेंज है, छोटे मोटे चेंज आ जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने सिक्योरिटी आईडी, और इसे भी बेटर अगर आपको इस चीज को समझना है, देन यू कैन ऑल्सो गो टू देयर गिटहब। गिटहब पे इनका बहुत ही अच्छा क्लैरिटी के साथ यू कैन सी देयर दी सैम्पल कोड्स। ओके। सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट 2.1.0 दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। इसमें मैं नीचे जा रहा हूँ, गोइंग टू क्विक स्टार्ट, यू सी ओवर हियर, this is for equity cash. This is the place an order for equity cash. Perfect. So similar to that only we have done. So security ID 91997 we have put NSEQ buy. Quantity I've just put randomly 750. Price I've put 0. Okay. So now what I'm doing is it's a order market type, so इसलिए price 0 है. And if I run this, ये वाला मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। आपको एक आवाज हो सकता है सुने, बताना अगर सुने तो। अच्छा, आई हैव टू री ओपन दिस, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू री ओपन दिस बिकॉज मैंने ये फ्रेश खोला है जुपिटर नोटबुक। सो इस वाले पे मैं रन नहीं कर पाऊंगा अनलेस आई हैव पुट द आईडी एंड दिस थिंग। सो फॉर दैट आई विल हैव टू स्टॉप द स्क्रीन, क्योंकि मैं आईडी यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता। एक्सेस टोकन तो चलो बहुत लंबा है, आपको वैसे भी ये रीजनरेट होगा, तो ये एक्सेस टोकन है। और आईडी जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके। तो as to just keep things proper। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल के ऑब्जेक्ट बना लिया है। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन। सो दिस आई एम रनिंग अगेन, 1 second प्लीज। ओके। हाँ, I forgot to import the libraries. Now everything is fine. Now we are going to see this again। ये देखो, धन ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। अब बाकी चीजें तो ठीक है, ये तो पीडीएफ से आया है, सॉरी ये तो सीएसवी से आया है, ये तो हो जाएगा। एल आई सी का 1997 वी गॉट टू नो द सिक्योरिटी, नाउ आई एम रनिंग दिस। अब यहाँ पर ओके, सिक्योरिटी टाइप जीरो। ठीक है। सो जस्ट बिफोर दिस आई हैव रन, बिफोर द वेबिनार आई हैव रन दिस because I have opened a new set of files over here just to be a little more organized। यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं बना हुआ है। ओके। सो यू जस्ट बी पेशेंट, बट मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज
that जब मैं ये order place कर रहा हूँ, okay. Now what I'm doing is I'm going to orders in the Dhan account. So let me just share the screen again, please. Yeah. जब मैं order place कर रहा हूँ, just before the webinar, I had just checked this out on my Jupyter Python file. We can see that this order 750 ka, this is going there, and because this particular account doesn't have any funds right now, ये जो order status है वो failed है, and any which way the market is closed, so ये order जो है ये failed है, ठीक है? So the orders are being shown by using that function. Uh, 1 second. I think you can see the screen now clearly. ठीक है? So when this is happening, ये जब हो रहा है ना, ये order हम use कर सक रहे हैं, ये functions use कर सक रहे हैं. When this is happening is because uh, you know you are already connected with the trading API, and trading API is free, so you can experiment with this anytime. ठीक है? And now what we will go is we will go to the next step. हम देखेंगे हम और moving parts क्या है, हम उसको कैसे किस प्रकार से आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है? सो ये नोटबुक का जो अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने दिया, आई होप दैट इज क्लियर. वी ऑल्सो सॉ हाउ टू प्लेस द ऑर्डर. सो आप इसको सिक्वेंशली रन करोगे. हमारे जो ये जुपिटर नोटबुक्स है, दिस विल बी पुट ऑन द क्वांट्रा कोर्स एनीवे. तो आप वहां पे भी जाके रन करोगे. यू कैन सी हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग एंड यू कैन डाउनलोड इट एज वेल फ्रॉम देयर. सो एवरीबडी ऑल गुड? कैन आई just check for any questions if there is any? Hmm. There are many cloud virtual private space provider, AWS, Azure, hosting them. Okay. Okay, are you guys talking amongst each other? Yes. Algo will not have a network issue if you put it on cloud. That is true. That is true. Unless there is a major problem in their system only. Okay. Yeah, as it's Saturday, we can try something else, but we can try that later. Let me complete because there's a lot I have to share with you today. Okay. Right. सो आनंद जी बोल रहे हैं हिस्टोरिकल ओआई करने के लिए बताओ. सो आएगा आएगा, अभी हम हिस्टोरिकल डेटा में बहुत कुछ देखेंगे. ठीक है. ओके, सो ऑल गुड टिल नाउ. कैन आई हैव अ क्विक थम्स अप और समथिंग व्हेन आई गेट टू नो? परफेक्ट. ओके, नो लैग इज आल्सो नाउ. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक टू द नोटबुक्स and I want to share the screen with you. Going to my coding again. Huh. So sharing that screen, and now we're going to work with our notebook number 2. This I can't show live because market has to nahi hai, but this is something which I had run last night. कल रात को मैंने ये run किया था when MCX was open, and I prepared this end to end clarity के लिए how this is happening. Okay, so यहाँ पर what we are going to do अभी आपने API से जब कनेक्ट किया, what you are doing is you are placing an order and it is doing the task. It is your broker is again placing an order. So you're sending that message. It's a communication you're sending, a one-time communication you're sending. But WebSocket जो है उससे क्या होता है, ये भी आपकी API पैकेज में ही आता है. WebSocket से क्या होता है, आप एक कंटिन्यूस कनेक्शन बना देते हैं. आपके पास कंटिन्यूस डेटा आते जा रहा है आते जा रहा है. That is WebSocket. As simple as that. Again, along with these notebooks, please also refer to the Dhan GitHub. Okay, इसमें भी आपको कुछ insights मिलेंगे just coding structure को better समझने के लिए, and also the API documentation. But ideally, what is done over here, this should also work for you if you run it. So सबसे पहले मैंने क्या किया, I imported the important libraries. Important libraries which will be Dhan context, market feed, Dhan HQ. Now Dhan context and Dhan HQ I
already have used. Market feed is the one which helps me do the WebSocket वाला business. Okay. So market feed को import करना बहुत जरूरी है. Pandas is PD, matplotlib and नेस्ट अंडरस्कोर एसेंशियो पर्टिकुलरली जुपिटर के लिए यूज हो रहा है जस्ट सो दैट द वेब सॉकेट रन्स प्रॉपरली. अभी यू डोंट नीड टू थिंक टू मच अबाउट इट एंड इफ यू आर रनिंग दिस ऑन सम अदर आईडी लाइक VS Code or PyCharm or something else, then you might not need this. But anyway, no harm, just it's put up over here. Okay, so nest intio, the nest underscore asintio that has been applied. This is only for safe side. Okay, I don't need to worry about it. And I'm importing from time I'm importing sleep. मतलब कोई इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. Alright. Moving on. We have the Dhan object to be created as we have done previously also. यहाँ पर हमने कर लिया. Create client ID, access token. ये डाल लिया, ये create हो गया. Again, these are placeholders. I have hidden the actual API credentials. Moving on. देन वी हैव आर मार्केट फीड. तो अभी जो गोल्ड MCX कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया था. ठीक है. और अभी वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आई हैव इट इन अ डिफरेंट नोटबुक. उसमें हम ऑप्शंस भी देखेंगे. सो आई एम नॉट गेटिंग डीप इनटू दैट. बट गोल्ड फ्यूचर सेलेक्ट हुई और उसका सिक्योरिटी आईडी वाज 445003. परफेक्ट. नाउ मुझे एक ट्यूपल्स का सेट बनाना है. बेसिकली ट्यूपल्स का लिस्ट बनाना है. इस तरीके से एक ट्यूपल है. एक ट्यूपल पाइथन की एक डेटा स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. ये राउंड ब्रैकेट्स के बीच में होती है जिसमें मैं सिक्योरिटी आईडी भी डालूंगा और मुझे मार्केट फीड से टिकर चाहिए, कोड चाहिए, पूरा मार्केट फीड चाहिए. ये सारी चीजें मैं डालूंगा और वर्जन 2 ऐसे मुझे यहाँ बाहर डिफाइन करना है. ठीक है. So this is something which I have defined as a variable version v2. This is something I have defined as a variable MCQ instruments. अब I'm going to use this और सिक्योरिटी आईडी तो यहाँ डिफाइन कर ही दिया जो हमने यहाँ अंदर यूज कर लिया. ठीक है. नहीं तो मुझे बार बार डालना पड़ता है ऐसे लंबा सा स्ट्रिंग में 445003 ऐसे बार बार डालना पड़ता है. नाउ मूविंग ऑन. यहाँ पर you can see a try and accept block. Now this try and accept block is again explaining this would me going to basics of Python. So I'm not getting deep into that. वो आप ऐसे भी कर सकते हैं. There are many resources out there. We have our Python for trading course, Quanta platform. You can check that out. Now over here ये जो है feed. Okay. Now feed is my object over here. ये जो है मैं नाम दे रहा हूँ feed इसको. और ये मार्केट फीड जो है याद है हमने इंपोर्ट किया था मार्केट फीड. दिस इज द सेम थिंग. मार्केट फीड लेता है देन कॉन्टेक्स्ट. इट टेक्स द MCX इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट टेक्स द वर्जन. MCX और इंस्ट्रूमेंट्स और वर्जन मैंने यहीं डिफाइन किया है. ठीक है. देन कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है एपीआई क्रेडेंशियल्स है. परफेक्ट. अब फीड के साथ एक मेथड आएगा फीड डॉट रन फॉर एवर. ओके. अब ये जो है ये कंटिन्यूसली रन होता है और हम बनाते हैं पाइथन का वाइल लूप. While true. Now, true and false are Boolean in Python. And true is always true. ये while one भी हम लिख सकते थे. One is again always continuously one. ये कभी भी इसका कोई कंडीशनल नहीं है. ये वो चलता ही रहेगा. राइट. बट ये ब्रेक कर सकते हैं. ये ब्रेक हो जाता है बाद में अगर कोई इंटरप्शन आ जाए, कोई डिस्कनेक्शन हो जाए तो उसके लिए प्रोविजंस बनाए हुए हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड इंटरप्शन तो स्टॉप बाय यूजर हो जाएगा. नहीं तो कोई फीड एरर भी आ सकती है. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. मे बी इंटरनेट इशू हो गया आपका. कुछ भी हो सकता है. नाउ नॉट गेटिंग टू मच इनटू दिस बिकॉज अल्टीमेटली ये जो फीड है दिस इज गोइंग टू गिव मी टिक डेटा. ठीक है. व्हेन आई से टिक डेटा कैन हैपन विद एवरी ट्रेड, एवरी बैच ऑफ ट्रेड्स. ओके. बहुत छोटे छोटे उसमें तो इतना फास्ट फास्ट आता है ना दैट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग टू सी. सो आई हैव जस्ट डन स्लीप 0.1. ये जो स्लीप है ये हमने इधर इंपोर्ट किया था फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप. ओके. तो ये 0.1 सेकेंड के लिए सो जाएगा और फिर मैंने इसको रन किया तो बहुत झटाझट डेटा आने लगा मुझे जाके इंटरप्ट करना पड़ा. ठीक है. सो स्टॉप बाय यूजर आप देख पा रहे हो ये आने लगा, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, डिस्कनेक्ट हो गया. गुड. सो मैंने इसको लगभग 200 डेटा पॉइंट्स लिया था ऐसा कुछ है. बट ये आप जब टिक डेटा देखोगे ना
ये कैसा लग रहा है? Does it look very neat and clean? Does it look very neat and clean? No, right? Let me just check the comments and questions. And give me 1 second. I just sip a little bit of water. All right. So just making sure we are all on the same page. Guys, I know you have a lot of questions. ठीक है, I'm more than happy. मुझे मौका और टाइम मिलता तो मैं सबके साथ बैठ कर बहुत लंबी चर्चा करता. बट द पॉइंट इज कि एक एजेंडा है, वी हैव टू स्टिक टू दैट एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल. सो सबको सीखना है. सो बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, राइट. तो कुछ क्वेश्चंस को हमें बाद के लिए छोड़ना पड़ेगा, कुछ आपको भी फिगर आउट करना पड़ेगा. बट आई एम रियली सॉरी, कांट टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो आई एम टेकिंग सम रेलेवेंट वंस which are relevant to what we are doing. Okay. So ये जो किसी का क्वेश्चन आया है, will algo work in option buying without indicators, only price action? The answer is yes. And why we are having this session also is because these moving parts, एक तरफ इंडिकेटर, एक तरफ ऑप्शन है, एक तरफ ऑप्शन सेलेक्ट करो, ऑप्शन का डेटा निकालो, एटसेट्रा एटसेट्रा, all these different moving parts, they need to work together and you need to know how this connection works with each other. Okay, which is why we're doing this, so that you have full clarity of where we are headed. And ये भी मैं बता दूं that this is a level 1. This is not super expert level, but this is very good to start with, very good to even people who want to apply it. That's completely fine. Okay, but इसको हम और एलिगेंट और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, perfect. So moving on, as I have been talking about टिक डेटा. टिक डेटा बहुत ही दिखने में बहुत ही कमर्सम दिख रहा है. There is no clarity. But if I try and take something out from here, if I just say कि ये जो डेटा आया है, रिस्पॉन्स आया है, मैंने प्रिंट किया है इसको, ठीक है. सो ये जो है, सेकेंड, हाँ, प्रिंट टिक जो हुआ है. Now what is happening? This tick is feed.get it. What is happening exactly is that I am getting this in JSON format. Now JSON format is again not trying to complicate it for newcomers. इसको सिंपल वे में समझ ले कि ये पाइथन की डिक्शनरी फॉर्मेट जैसा है. ठीक है. अब पाइथन की डिक्शनरी फॉर्मेट से नहीं समझ में आ रहा. So let me give you a quick demo on that. A very small demo on that. ठीक है. So Python has got various data structures. Okay. For example, a list could be looking like this, a list of numbers, and this could also include some string values, which are basically letters. Okay. Okay. So this is a list. Now, if I store this, इसका जो टाइप है ये होता है लिस्ट, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझा रहा हूँ. ऑलराइट. नाउ ये हो गया क्लियर. अब एक आते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी. सो लेट मी जस्ट कॉल इट डिक्ट अंडरस्कोर 1. इसका जो फॉर्मेट है विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट यू आर सीइंग अबव. ठीक है. सो इसमें क्या रहता है, एक की रहता है. जैसे मैं बोलूंगा नेम. अब नेम में आई हैव पुट बॉब एंड सैम. ठीक है. दीज आर नेम. तो मैंने क्या किया, मैंने एक की बनाई और उसके साथ मैंने बॉब कॉमा सैम एक लिस्ट डाल दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट हो गया, लेट्स से एज. एज तो मैंने ये एज में नंबर्स डाल देते हैं. लेट्स से somebody is 20 year old, somebody is 22 year old. ठीक है. सो ये हमारा जो है, ये हमारा एक डिक्शनरी बन गया है. अब इसका टाइप में देखने जाऊंगा, सॉरी, एज को स्ट्रिंग में डालना था, तो ये स्ट्रिंग वैल्यूज. तो इसमें इफ आई गो इन लुक इनटू द टाइप, इट विल शो दैट इट, एक तो ये डिक्शनरी है ही टाइप, अगर मैं देखता हूँ, इट इज
डिक्ट। ओके, सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डेटा है। जस्ट इमेजिन रियल लाइफ में हर तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करने जाते हो, एक स्ट्रक्चर में पार्क है। ठीक है, आप आइस जमाना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं है ना कि आप कैसे भी जमा देते हो, आप आइस ट्रे में जमाते हो बिकॉज उसमें एक स्ट्रक्चर है। वैसे ही हमारे को डेटा ना एक स्ट्रक्चर में आती है, और हम उसको और बेटर एनालाइज और हैंडल कर सकते हैं। हम उसके स्ट्रक्चर को समझे और या फिर उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें। ठीक है, सिमिलरली पैंडास डेटा फ्रेम भी एक स्ट्रक्चर है, जो टैबुलर डेटा के बारे में हम बात कर रहे थे। सो सिंस वी हैव पैंडास, मैं क्या करूंगा कि मैं एक डीएफ बनाता हूँ डेटा फ्रेम, इसको मैं डीएफ 1 लिखता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो डिक्शनरी है ना, जो ये ऐसे दिखने वाला है, इसको मैं एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो सबसे पहले, इफ दिस इज नॉट ऑलरेडी डन, बिकॉज ये अब ये फ्रेश फाइल है तो इसलिए वो पहले के इंपोर्ट नहीं काम करेंगे। इंपोर्ट पैंडास एसपीडी। ठीक है, and then df1 is going to become pd dot data frame। अब ये क्या करूंगा, मैं इसके अंदर डिक्ट को डाल देता हूँ। अब ये जो मेरा डिक्ट अंडरस्कोर 1 है, दिस विल बिकम, मतलब df_1 will become a tabular format of my dictionary। This has become a tabular format of dictionary। I know this may be not very familiar for a lot of people, to a lot of people, this may be very new to a lot of people, don't worry, but Python for basics आप सीखो समझो अच्छे से होगा आपका। बिकॉज बेसिक्स तो चाहिए, सिंटैक्स कैसे मैनेज करोगे आप, राइट। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस, आप सोच लीजिए कहीं पे भी स्ट्रक्चर है। अभी मैं सुबह किचन में था तो मसाले पड़े हुए थे, फिर मैंने देखा मसाले एक तरीके से डब्बे में, सेम साइज और शेप के डब्बे में पड़े, वो भी एक स्ट्रक्चर है। अब मसालों को तो आप ऐसे खोल के नहीं रख सकते, ठीक से स्टोर करना पड़ेगा। वैसे ही डेटा है, आप ये समझ लीजिए ये मसाला है, आप इसको स्टोर करना चाहते हो नीट एंड क्लीन वे में डब्बे में। तो ये हमारा गोल होने वाला है, बिकॉज एक बार डेटा आ गया, सिक्योरिटी सिलेक्शन हो गई, कनेक्शन बन गया, वेब सॉकेट भी सीख लिया हमने, तो अब क्या है, इसको स्टोर करना है ताकि हम इसके साथ कुछ कर सके, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट एजेंडा। ठीक है, तो अब ये जो टिक्स है हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब ये वाले में भी एग्जाम्पल में भी ये आएगा, बाद में भी आएगा। अभी वाला एग्जाम्पल जो है, इसके अंदर मैं बस इतना सा बोलूंगा कि ये जो टिक एलटीपी है, ये मैंने क्या निकाला, टिक एलटीपी निकाला। ठीक है, ये एलटीपी को निकाला मैंने यहां से। अब देखोगे हर टिक में ना बार बार ये एलटीपी एलटीपी आ रहा है। ये देखो एलटीपी आ गया, फिर वापस से ये टिक आया, सॉरी ये पूरा आ गया, फिर एलटीपी आ गया। ठीक है, फिर वापस से एलटीपी आ गया, फिर बाकी सारी चीजें आ रही, फिर एलटीपी आ गया। तो ये एल टी पी इज फॉर लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो डिक्शनरी जैसा जेसॉन फॉर्मेट में डेटा आया है, जेसॉन फॉर्मेट इज डिक्शनरी लाइक। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करके मैंने छोटा एग्जांपल दिया था आपको डिक्शनरी का। ठीक है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा कुछ निकाल देता हूँ, सिर्फ टिक निकाल देता हूँ, सिर्फ एलटीपी निकाल देता हूँ, सॉरी। तो मैंने इस प्रोग्राम को यूज करके मैंने एक पहले तो एलटीपी लिस्ट बनाई जो एम्प्टी थी, फिर इस प्रोग्राम को यूज करके मैंने वापस से डेटा मंगाया। मैं बोला इस बार डेटा आओ, रन फॉर एवर करो। लेकिन तुम आओगे ना, सो गेट डेटा तो आएगा ही, साथ में व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप अपेंडिंग आर लिस्ट विच इज आर एलटीपी लिस्ट। तो ये एलपी एलटीपी लिस्ट डॉट अपेंड करने से एक लिस्ट में चीजें ऐड होती जाती हैं। सो डॉट अपेंड से इसमें एलटीपी ऐड होते गया, और हमने इसको प्रिंट भी करते गए, हम प्रिंट भी करते गए, प्रिंट भी करते गए, प्रिंट भी करते गए। और बिकॉज ये मार्केट क्लोज के आसपास था, थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होगी या काम कम हो रहा होगा, इसमें ट्रेडिंग कम हो रही होगी, सो दिस इज नॉट चेंज्ड अ लॉट। फिर भी मेरे पास ये 204 एलटीपी आ रहा है। ठीक है, अब इस एलटीपी को, यानी कि ये जो लिस्ट है, एलटीपी लिस्ट है, इसी को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, और इसी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके मैंने इसका एक प्लॉट बनाया, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये देखो ये 200 टिक्स में ऐसे से मार्केट मूव किया, सो दिस हाउ इट इज लुकिंग लाइक। ओके,
आगे जाके हम वापस ये करेंगे, मिनट चार्ट पे करेंगे, मिनट डेटा पे करेंगे, थोड़ा और ऑर्गेनाइज लगेगा, थोड़ा नीट लगेगा वो। बट टिक डेटा को हैंडल करना है तो ऐसे हैंडल किया जा सकता है। ओके, ये 0.1 सेकेंड्स को मैं हटा के और छोटा कर सकता हूँ, 1 सेकेंड भी कर सकता हूँ, एटसेट्रा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज डन। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट नोटबुक। सबसे पहले बिफोर आई गो ahead, I just want to check if everybody is cool, everybody is okay, all things are good. अब हम जाने वाले हैं हिस्टोरिकल डेटा में, जो हम मिनट डेटा में निकालेंगे। ऑलराइट, सो let me just check some questions. Somebody's asking, can we have all ready-made Python syntax just to deploy with its process and start to trading? Well, I don't know your exact name, but Mr. or Miss, we can have everything ready to deploy, but the world doesn't work like that, because there will be some changes, there will be some assets, there will be market changes, there will be some syntax changes at sometimes. So you have to know the thing in and out. And that is the best way. You can use some aid in your development. You can use some previously made syntax to help you create your own, no problem. But exactly ready-made you may not get. If you get, it may not be exactly valid like that. You will need to update it later. Okay? It won't be for a very long time. It will not be, for maybe a few weeks or something. Have to check and you have to monitor also. Those kind of things are there. Yes, options using indicators is also possible. We have got a library called the TA library in Python, technical analysis library. So you don't have to calculate each and everything. You can simply use the functions which are already coded, hard coded in that, pre-coded in that library. So for example, ta.rsi will give you the RSI. So you'll have to feed to it, you have to give the input to it, the closing price, etc. So that is something which can be used to directly calculate without putting your brains too much into the formula. Also, if you have something unique, you're most welcome to use NumPy and Pandas and apply your formulas. Um, okay, Siddesh is asking, this is tick data. It is every tick in the market that comes at microseconds level, or is it some snapshot of the data? Well, this with unless you have the direct market access, okay, it's always a snapshot data, but it is very close to that tick data. Okay, so I hope you get that point. Uh, Tick data is real-time market change. Absolutely, that's what the WebSocket is giving to you. Absolute direct market changes, real time. Real-time order update has which fields? Does it show that queue position my order? So this is something which is I'll have to deviate from my material. So maybe we can come to it later if we have the time. But you'll have to figure these small things out. At this point, I can't deviate too much from the material, right? So there are multiple types of order. Yes, order modification can also work. It is not easy to understand in one go. So how will I get acquainted to this as I'm a beginner? So I gave you one solution for the basic Python. Also, we're going to have this webinar uh, up here as a recording. That doesn't mean you don't pay attention now. You pay attention now, but you can always come back and refer to this recording, right? And learning, I think, as a trader, as somebody who's been a market participant for a long time, I believe that learning is something you always have to upgrade yourself with. There was a time when we didn't have calculators in the world, and people had to learn how to use a calculator, then computers, and now you have even AI. So at every front, you can learn a lot. Okay. And I've been using a lot of LLMs, etc. myself, and I think everybody is using that. Okay. So using LLMs is also a very good, way to give you a coding assistance, right? So that is going to help you. And many of these LLMs are a bit well versed with the um, Dhan API documentation also.
So there are many of these concerns you have to look into. Okay. So I guess the questions are done now. Moving on to my next notebook, which is historical intraday minute data. Is everybody excited? Can I have a quick thumbs up or something? Because until I don't see that, I don't get motivated sometimes. थोड़ा सा हिंदी? Okay, fine. I'll use a little bit more of Hindi. Okay, ठीक है. Moving on. So now we are going to go to a stage जहां पर हम इंट्राडे डेटा लेते हैं, मिनट डेटा. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये इसके उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च करना चाहते हैं, बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है who want to use this minute data to maybe calculate indicators, and then generate some signals. Those kind of things can be done. ठीक है. So we are going to use historical data, and when I say minute data, what will happen is अगर आप ये मार्केट आवर्स में रन करोगे तो जो डेट तक आप रन कर रहे हो इवन आज का लास्ट मिनट तक आपको दिख जाएगा. ओके. बिकॉज आज से 1 मिनट, अभी से 1 मिनट पहले भी हिस्ट्री, राइट, और उससे पहले के दिन का भी दिख जाएगा. सो यू कैन गेट अप टू 90 days ऑफ डेटा. तो अगर आपको 90 days से ज्यादा का चाहिए देन यू हैव टू टेक इट आउट इन बैचेस. ठीक है. तो कैसे करना है हम समझ लेते हैं. ओके. तो सबसे पहले हमने सब इंपोर्ट कर लिया. थोड़ा फटाफट चलते हैं. फिर हम धन कॉन्टेक्स्ट में गए. हमने धन इनिशिएट भी कर लिया. ठीक है. एंड जस्ट 1 second guys, I'll just stop the screen and just run something over here. I guess ये रन किया हुआ नहीं है. ओके. ठीक है. सो मैंने ये ना इनिशिएट किया था. नाउ एचडीएफसी का जो डेटा है, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन बैक अगेन. कहाँ गया यार? 1 second. Thank you for the patience. Here we go. So so ये एचडीएफसी का सिक्योरिटी आईडी है. So what we're going to do is we're going to pull the data for this. From date to date, all these different parameters I have defined as different variables. And last में जाकर, और this I am doing right now. So even if the market is closed, because this is not WebSocket, तो मैंने अभी इसको रन कर लिया. इसकी जगह में ये 20th की जगह में ये लेट्स से 18 डाल दूँ तो मुझे 18 से टाइम तक डेटा मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज समथिंग विच आई कैन डू. मैं 20th का डाल रहा हूँ तो 20th का मिल जा रहा है. फ्रॉम डेट और टू डेट दोनों 20th दिखा रहा हूँ तो एक ही दिन का मिलेगा 20th का. तो 20th मॉर्निंग से लेके बाद तक का मिल जाएगा. ठीक है. तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जो अल्टीमेटली इस फंक्शन में जाएंगे जो वन में डेटा निकाल रहा है, उसमें क्या क्या है? सिक्योरिटी आईडी है, क्या क्या हमने डिफाइन कर लिया. ठीक है. एक्सचेंज सेगमेंट है, क्या क्या हमने डिफाइन कर लिया. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट टाइप है, इक्विटी है, डिफाइन कर लिया. फ्रॉम डेट टू डेट डिफाइन कर लिया. इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए गो टू द गिटहब. थोड़ा इस बार रिवीजन हो जाएगा. आप भी देखो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होगा. ये रहा इंट्राडे मिनट डेटा. सी इट इज द सेम कोड, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. बट इसमें जो सर्टिलिटीज है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सब खुद से करनी पड़ती है. ठीक है. तो ये करना पड़ेगा. आई कैन शो यू वन एग्जाम्पल. अब आई कैन शो यू 20 एग्जाम्पल ऑफ द सेम थिंग, राइट. सो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए. एंड देन पुल आउट एफ एन ओ डेटा ऑल्सो. एफ एन ओ डेटा वी विल डू ओके आफ्टर दिस नोटबुक. तो उसमें विल डू द स्ट्रैटेजी पार्ट. ठीक है. तो डेटा आ गया मेरे पास. इस डेटा को मैंने प्रिंट कर लिया. तो नाउ दिस इज लुकिंग लाइक विच फॉर्मेट? Which format is it looking like? What is the structure of this data? Any answers? I'm not sure if this is live. Uh, no, थोड़ा सा lag है. So maybe people will not be answering immediately. चलो कोई नहीं. So this is showing us a structure of dictionary like. ठीक है. तो ये जो डेटा है डिक्शनरी जैसे स्ट्रक्चर है, तो मैं इसका टाइप चेक करने जाता हूँ पहले. सो आई विल सी क्या टाइप है. ठीक है. टाइप ऑफ डेटा इज डिक्ट. सो ये डिक्शनरी ही थी. अब जो डिक्शनरी मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी, इसको बोलते हैं कीज. ठीक है. इसको बोलते हैं कीज. तो ये नेम है, नहीं ज्यादा कीज. तो सिमिलरली इसमें क्या कीज है पहले मैं निकाल लूं. अच्छा, कीज में ये है स्टेटस है, रिमार्क्स है, डेटा है.
तो अब मैं जाऊंगा, ये स्टेटस रिमार्क्स डेटा तो मैं समझ रहा हूँ। एज आई प्रिंटेड दिस, मुझे ऊपर में कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखा था, स्टेटस सक्सेस, रिमार्क्स इज नथिंग बेसिकली, एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज डेटा 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 डेटा, ऑल ऑफ दिस इज डेटा। तो मैं थोड़ा सा इसको समझ गया हूँ। इसको देख के मेरे को समझ आ गई है कि इसमें जाना है, आई हैव टू पुल आउट ओनली डेटा। तो मैंने इस डेटा में से जो डेटा की है उसको निकाल लिया। इसका भी टाइप क्या है, ये भी डिक्शनरी है। इसके कीज क्या है, इसके ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम है, टाइम स्टैम्प है। अब इसको देखते ही एज अ क्वांट रिसर्च मैं तो एक्साइटेड हो जाता हूँ कि नाउ आई हैव गॉट व्हाट आई नीडेड, ओपन हाई लो क्लोज। तो आप देख रहे हो वो एकदम जो बहुत ज्यादा कम्बरसम तरीके से अरेंज डेटा होती है, उससे आप एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में जाना चाहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अभी नाउ आई नो दैट दीज आर द कीज, नाउ आई नो हैव अ डिक्शनरी ऑफ ओपन हाई लो क्लोज, मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा एंड वाला, हियर वी गो। df pd डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और डॉट हेड से मुझे पहले 5 रोज दिख जाते हैं, 0 to 4। ओके, परफेक्ट, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, टाइम स्टैम्प भी है, बट ये टाइम स्टैम्प थोड़ा अजीब सा दिख रहा है मुझे। दिस इज नॉट द टाइम आई एम यूज टू सी। ठीक है, तो मैं इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, और ये जो टाइम है ना, इसको मैं ये 0 1 2 3 हटा के इसको इंडेक्स बना दूंगा। सो ये डीएफ डॉट इंडेक्स पहले टाइम स्टैम्प बन गया हमारा। एक बार देख लेते डीएफ डॉट हेड करके वापस से कि ये ठीक से दिख रहा है क्या। जी हाँ, अब ये टाइम स्टैम्प की जगह अपने आ गई। अब एक बार हम इस इंडेक्स को ना थोड़ा सा आईएसटी में चेंज करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और इस हर एक लाइन में मैं नहीं जा रहा हूँ कोड के, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस इफ यू स्पेंड सम टाइम। एंड डीएफ डॉट हेड कर रहा हूँ, इसमें डीएफ डॉट हेड टू पहले 2 रोज दे रहा हूँ, पहले 5 रोज भी ले लूंगा सिंपल df dot head करने से। Then also I can see open, high, low, close, volume, timestamp, everything is there, and the time is showing 9:15, 9:16, 9:17, 9:18 जब से मार्केट खुली है। एक बार df dot tail देख लेते हैं, बिकॉज df dot tail gives me the last 5 rows, और मैंने सिर्फ 20th का डेटा निकाला है। तो ये 3:30 तक आना चाहिए, परफेक्ट। 3:29 वाला जो लास्ट मिनट है तब तक आ रहा है। So last 5 minutes and the first 5 minutes I can see this entire data frame has the whole day's data। इसको मैं एक प्लॉट करके देखता हूँ, इसकी क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट कर रहा हूँ, एंड दिस इज इंट्राडे चार्ट आपका बन गया फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम धन एपीआई यूजिंग वेरी सिंपल कोडिंग। ऑलराइट, this is the movement of HDFC on that day on the minute chart। ओके, सो आपके पास ओपन हाई लो क्लोज हो गया, आपके पास चार्ट विजुअली भी आ गया। You can do a lot of research with this. You can do a lot with this, believe me. Okay, let me just quickly check if there are any questions anybody has. I know थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा थकाने वाला भी है, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में क्वेश्चंस ले रहा हूँ, trying to pace it in the right order so that it doesn't become too difficult, trying to go wherever I can go into simplifying the codes. Okay. Storing epoch in database is good, or sometime the other format. See, there can be a detailed answer. Everybody here does not understand epoch. So this can have multiple answers depending on the situation. But for now, for our purpose, हमने क्या किया, epoch टाइम को हमने सिंपलर, जो हम डे टू डे में जैसे टाइम और डेट देखते हैं, हमने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। दैट इज हाउ आई वांटेड टू सी दैट। ओके, and that is how it would be recommended if I want to do research and make more sense of the timestamps, right? ये सब आपको हमारे कॉन्ट्रा प्लेटफॉर्म में कोर्स, जो धन नोटबुक का कोर्स कमिंग फ्यू डेज में आने वाला है, कमिंग वेडनेसडे आने वाला है, उसमें मिल जाएगा। उसमें ये वेबिनार रिलेटेड सब रहेगा, और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, सो यू डोंट नीड टू वरी। आपको ये सब करना है क्या, इज द क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग। द आंसर, सिंपल आंसर है इसकी, लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्ट्रेटेजीज बिल्ड करने हैं तो ये सब समझना तो पड़ेगा, राइट। तो ये आपके लर्निंग के लिए है, और उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स ऑब्वियसली विल बी समथिंग विच विल स्टिक टू यू, यू विल बी एबल टू यूज दोज लेसन्स। सम थिंग्स यू विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, बट इतना भी समझ में आया तो आप समझ ली यू हैव डन अ वर्क ऑफ मेनी डेज, because people who are, I see a lot of people here, and this is amazing to see how motivated people are to learn and upskill themselves. Okay, so that's amazing. Okay.
Now let's move on to the next one. All right. So now I'm going to show you how to select options. Okay. How to select options. क्योंकि सिक्योरिटी आईडी तक हमने बात की. सिक्योरिटी आईडी will give me what I need, right? It will help me connect with the API, WebSocket, it will help me connect and get the intraday data, historical 1 minute data, various other things. But problem क्या है is that when we have got options, options में बहुत सारे variations हैं. जो निफ्टी अगर मैं टाइप करूंगा उसके डिस्प्ले नेम में, तो निफ्टी के तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. बट इफ आई वांट अ पर्टिकुलर ऑप्शन, हाउ डू आई चूज दैट? तो उस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा काम किया है. तो हम सेलेक्टिंग ऑप्शन से पहले हम जनरल सिलेक्शन पे आते हैं. ठीक है. और हम यहाँ पे फेच धन इंस्ट्रूमेंट्स वाला फंक्शन जो है ये डिफाइन कर रहे हैं. अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये हमारे दिए गए एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंट टाइप को यूज करके इट विल मेक सम, इट विल सेलेक्ट अ सर्टेन सबसेट ऑफ द डेटा. ठीक है. और हियर व्हेन आई से डेटा, आई मीन टू से द एंटायर टेबल, द मास्टर फाइल विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स वेरियस सिक्योरिटी आईडीज एंड अदर थिंग्स. ठीक है. और ये यूआरएल भी ले लेता है फंक्शन. तो यूआरएल तो हमने पहले भी डाला था, तो हमें पता है. ये यूआरएल को रीड करेगा. उसके बाद इट विल फिल्टर बाय एक्सचेंज एंड इट विल फिल्टर बाय इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनली इट विल रिटर्न अ डेटा फ्रेम व्हिच इज अ सबसेट. ठीक है. सो हम यहाँ देख रहे हैं, आई एम रनिंग दिस सो दैट अभी इसमें आई डोंट नीड एपीआई, बिकॉज एक सिंपल यूआरएल है जो कि एक सीएसवी फाइल है. इसमें आई डोंट नीड एनी एपीआई. ओके. अभी आई एम रनिंग दिस. तो मैंने यहां पर क्या चेक किया था? यूआरएल मैंने दे दिया था यूआरएल जो हमारा मास्टर फाइल का है. ठीक है. एनएसी फॉर टारगेट एक्सचेंज एंड टारगेट इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑप्शंस. ओके. सो व्हेन वी हैव गॉट दिस, we have also, it's here that it's got so many records, 2,17,000 records, you can imagine. Okay. Now after filtering, it's got this 1,27,000 records. So you can imagine how many index options and all kinds of options it's taking, or NSE it is taking. Okay. So इसमें बहुत सारे पुराने आने वाले साल के भी कुछ ऐसे भी हैं ऑप्शंस वगैरह, बहुत सारे हैं. ठीक है. सो दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट. और सिक्योरिटी आईडी जो मुझे एक्चुअली चाहिए वो तो है यहाँ पर. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा रिफाइन करेंगे. तो हमारे पास ये जो है, इसको हमने क्या नाम दिया? इंस्ट्रूमेंट्स अंडरस्कोर डीएफ. ठीक है. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इस इंस्ट्रूमेंट्स अंडरस्कोर डीएफ में से मैं सिर्फ वो निकालता हूं जो मुझे चाहिए. पहले तो मुझे चाहिए इंडेक्स ऑप्शन में सिर्फ इंडेक्स, एक ही इंडेक्स चाहिए, निफ्टी. तो मुझे निफ्टी ऑप्शंस का मिल जाएगा. ठीक है. तो उसका एक सबसेट में निकालता हूँ. आई विल कॉल इट निफ्टी अंडरस्कोर ऑप्शंस. और बैंक निफ्टी अंडरस्कोर ऑप्शंस भी एक बना लेते हैं. सो लेट मी रन दिस एंड जस्ट टू चेक आउट, बैंक निफ्टी अंडरस्कोर ऑप्शंस लुक्स लाइक दिस. वेरी क्लियर, ऑल गुड, वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पर डॉट हेड है, इसमें टू डाला है इसलिए टू रोज दिख रहे हैं. एक्चुअली इसमें कितने रोज हैं वो तो आपको ऐसे मालूम पड़ जाएगा एंड डॉट शेप से मालूम पड़ जाएगा. तो इसको मैं डॉट शेप एक बार करके दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली इसमें कितने रोज है. सो डॉट शेप इज गॉट 2,450 रोज. ओके. एक बार वापस से वी कम टू डॉट हेड जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, वी पुट इट ओवर. ठीक है. सो इट्स गॉट मेनी रोज. नाउ अब मुझे चाहिए कि बैंक निफ्टी की जो दिसंबर की एक्सपायरी है. सो इसमें क्या है, व्हेन आई सॉ दिस डेटा फ्रेम, आई सॉ यहाँ पर ना डिस्प्ले नेम में एक्सपायरी डेट लिखी हुई है. एंड ऑल दीज आर स्ट्रिंग्स, ऑल दीज आर बेसिकली टेक्सटुअल डेटा. सो इस स्ट्रिंग में से देयर इज अ फीचर which in Python language is called string method, str dot contains. So if it contains 30 December, then please put it bnf underscore dec underscore expiry इसके अंदर. So we filter this further by using is sorry, str dot contains. Okay. Then bnf expiry हमारे पास आ गई. Okay. Now ये हो गई bnf expiry डॉट हेड. ठीक है. तो इसका जब मैंने नेचर देखा, इसमें मैंने देखा
कि अगर मुझे 69,700 का कॉल चाहिए, ऐसे वैसे भी मुझे दिख रहा था, डिस्प्ले में ही दिख जाएगा, डिस्प्ले में आई एम गेटिंग द स्ट्राइक प्राइस ऑल्सो, सो आई एम फर्दर फिल्टरिंग इट विद द डिस्प्ले नेम, जिसमें मैं दिसंबर भी डाल दे रहा हूँ और कॉल 69,700 तीनों डाल दे रहा हूँ। तो अगर इफ इट कंटेन्स दिस इट विल शो मी, एंड आई हैव डिफाइंड इट पर्टिकुलरली एज कॉल अंडरस्कोर 69,700. So easily we can see call underscore 69,700 is just one row, okay? And उसमें से extract करना security ID is not a big deal. इसका security ID is 35,000 35,000. This is the security ID. ठीक है? So why I went through this is कि ये जो पूरा selection process है, ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो मास्टर फाइल आपके पास आएगी ना, अभी मैं दिखा रहा हूं तो आपको बहुत इजी लग रहा है क्योंकि आई हैव ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स अर्लियर, but this can be very confusing because we've got so many data points of so many instruments, okay? And options may, any which way, you have so many different instruments under the category of options. So it becomes slightly difficult to select. So now we have completed this select options notebook. Okay. We have understood another moving part. So now what I can do is I can come closer to get all these things together. All right. So perfect. I hope people are ready for it. We are also running at the correct pace, correct time. So I'll just take a minute out and see the questions. Just 1 second. 1 second. I just have a little bit of water. Thank you. So yeah, I'm getting a question. Is it possible to get all the option Greeks and historical data? 100% is possible. So just to make sure that we have compact lessons and clarity of thought, I have not put that part. Maybe in future we can see some part like that, where we can download the entire option chain also. Okay. And using that, we can extract delta, theta, gamma, the various option Greeks, etc. We can do that. Okay. So that can be done. You can use options data to make computations also if you want to use a particular, block of code to apply a options pricing model. All those things can be done as well. Historical intraday data is API date based, so it does not consider time you send along with dates. No, no, no. It does consider time. It has, you can't take more than 90 days data. So the code was written in a way where from date and to date both were there. Okay. When it is saying historical and intraday, the meaning is कि पहले का अगर आप करोगे तो वो आएगा ही, साथ में अगर आप मार्केट आज में रन कर रहे हो और सपोज 2:01 हो रहे हैं, तो 2:01 तक का तो या 2 बजे तक का तो आपके पास आ ही जाएगा आज का भी, इफ यू हैव पुट द डेट ऑफ टुडे. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. इंट्राडे भी है एंड हिस्टोरिकली मोर देन 1 डे का भी आपको 1 मिनट डेटा मिल जाएगा. अप टू आई थिंक फ्यू ईयर्स तो है ही धन में, 5 years तो है, ऐसा कुछ है. So I have to be sure, but 90 days at a time you can pull. When you pull 90 days at a time, you can store it. And then all the 90 days, 90 days you can put together. तो ऐसे करके आपके बहुत सारे डेज का हो जाएगा, right? Okay. Nila is asking how to identify at the money, in the money, out of the money. We'll come to that. Okay. We can link option Nifty to Microsoft Excel. If you want to do that, you can do that. If there's a purpose for it, you can do that. That's no problem. Uh, Somebody is saying, so, Mahesh Sonavne, hello sir, this looks complicated to learn algo trading if not technical background. See, what do you mean by technical background, non-technical background? It is, everything is only as difficult as you have perceived it to be. Everybody who was
who, let's say, supposedly from a technical background is doing things, they have also learned from zero only. They've started somewhere. So if you have the drive and motivation, then there's nothing to stop you. Okay. And everything I'm showing in front of you. So at least to that level, spending some time with the recording of the webinar, if nothing else, definitely you can live up to that level, right? You can experiment also. Understanding basics, algorithmic trading, I understand is a skill set, and you have to sort of learn from a certain point of view. Yeah, you will have to go to the learning process, find the right learning resources, and then go ahead. How to call future historical data while live data. Okay, coming to those things. So let us continue. Okay, number of questions have been answered. So now we come to the final strategy workflow, and the only thing today is that since it is a non-market hours day, it is not really possible to show you very accurately how the strategy would be generating a signal and placing an order immediately. Okay, that part is not exactly possible to show, but I will try my best uh, to show that. All right. So I hope you all are good. So what we are going to do today is we will be taking data that is 1 minute data, and we are going to take that data for a future, for a index futures. Okay. Now, once we have taken that data, next step we are going to do is we will generate signals. How do we generate signals? Using that 1 minute, I'm going to create a moving average, a fine moving average, which is basically a slow moving average and a fast moving average. Okay, we're going to create. Once that is done, once that is done, we are going to see where the signal is coming wherever there's a crossover. So the 5 moving average crosses over 20 period moving average, it's a buying signal. And when we get that long signal, we go and buy a bull call spread. Okay. We go and buy a bull call spread. Okay. So as everybody can see from my screen, I have opened the NSE website and I wanted to show you the option change so you can perceive this bull call spread in a better way. Okay. So for example, the market is around 26,068 right now. Okay. And here calls are there. So I can, if I want to say that, okay, I want to go long, I can buy any of these calls. I can buy at the money call, I can buy out of the money call, I can buy far out of the money, I can buy in the money also. So if I buy a call, what can be my maximum loss? Only the call itself. Okay. That is one go long on a naked option. That is one strategy. Now what happens is sometimes a trader might think that if the stock is going up, or Nifty in this case is going up, but it is not going up fast, it is going up relatively slowly. I may benefit if, because Nifty is right now over here around 26,100, you can see. Suppose I'm expecting the market to go to 26,400, but not above that. Or if I'm saying the market can go up a bit slowly. So instead of simply going and buying, suppose I want to intend to buy only 26,250 call at 36.05. I might want to buy this and I might want to sell this. Okay. As time goes ahead, because there will be some time decay in options, I will benefit from this. Also, if I leave it all the way to up,
expiry, my maximum loss is now no longer 36.25, it is 36.25 minus 12.4, which is approximately 20 to 21.85, something like that, roughly 22. Sorry, roughly 24, yeah, 23.5. So this would be the maximum loss. So in that way, my defined loss becomes a little less. Also, it might be possible that the overall moving volatility is lower. Because if I go long on an option, it will suddenly from 36, it will go to 50, go to, you know, 670, then it can go crash also to 25 to 7, 20, 12, anything. But when I have this spread, the overall volatility, this should be lower. Okay. Now, this is not a session on options, strategy, and Greeks and all per se. So I'm not getting so deep into that. But what I'm getting is from a general trader point of view. If we can understand each other, we can understand the why anybody would be motivated to buy an option and sell an outside option. एंड हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई पुट भी वैसे ही खरीद सकता है लाइक कॉल आपने किया बिकॉज कॉल बाई कॉल बुल कॉल स्प्रेड आपने ट्रेड किया बिकॉज यू वर बुलिश you get a short signal or a sell signal you can do the same thing with a bear put spread you can buy a put and sell it further out of it. Okay, buy a put and sell further out of the money. Okay, so this is as simple as that. So our agenda is going to be to do this as well. So we have got a strategy workflow ready over here. Okay. Now, and before I go, since this is the last notebook I'll be, sharing, I just wanted to show you that इससे पहले जो नहीं हो पा रहा था, there must be some problem with the code which had not ran in the previous cell. But I just wanted to show you so that nobody has any doubt that if I want to place an order, I'm placing the order here and it is showing status as failure because the market is closed. Okay. So this is the reason why this order is not going over here. The market is closed. Okay. Now coming back to this notebook which I was talking about. Now strategy wise, right? So then client object, everything is created. Okay. ID and access token, everything is set. Now, um, huh. Now what I am taking is I'm taking the, sorry, this is my mistake marked. Huh. I'm taking the future index. Okay. Now this is my NSE FO. Okay, NFO. Sorry, FNO. NSE underscore FNO, which is my futures and options segment. And this is futures index. And I'm taking the minute data of this. So as I told you, I will be showing minute data of futures. This will be there. I have to run everything. So I'm not going to go back over here. I'm showing the dictionary. From this dictionary, I have converted into a data frame like we did last time. We've got a very neat and clean open, high, low, close. Okay, this is dot tail. And then I will convert the timestamp so I can get the uh, proper timestamps and timestamp has become an index. Then we generate the signal. So at any given point in time, if I'm having this, I can generate the signal. Why? Because मेरे पास close price है. In the data frame, using this close price, I can calculate my moving averages. Okay. So how do I calculate my moving averages? I use rolling window, rolling mean, moving average, rolling window 20, rolling window 5. Now I've got my moving average also. Okay. Now what I will do is just give me 1 second. I'm going to just run the initial part so that get full clarity. Hmm. Yeah. So before we get into calls and puts, so this is my rolling window I've got, right? So let me just show you how the data frame would look like. So my hist underscore df, it would look like this after generating the signals. It would look like
This is my historical table. Okay, I'm sorry. It would look like this. So this is my 5 moving average. It starts appearing after 5 data points because I need minimum of 5 data points to complete this. Then I have 20, then this starts after 20 data points, right? So like that, I've got my moving averages. After 20 data points, there are no NA in values. All values are clear. Now, if the close, I'm sorry, if the SMA, which is this column, SMA 5 column, if the SMA underscore 5 is greater than SMA underscore 20, then signal is bullish. So I need to have a SMA 5 greater than SMA 20. So what it will do is it will check for the last. It will check for the last row because as I am downloading the minutes, what is the last minute, which is the latest minute. So अगर latest में कोई signal है मुझे वो चाहिए. So when I have this hist underscore df, इसमें एक method होती है dot ilog, which is the integer location. उसमें अगर मैं -1 करूँ तो I will get the last data frame, which looks like this. I'm sorry, the last row, which looks like this. Hist underscore df dot ilog dot 1, ilog -1. So this is my last. इसमें open, high, low, close, everything I get. Okay, everything I'm getting. So this is my latest data. Now, if SMA 5 is greater than SMA 20, then I'll go for a buy signal, otherwise sell signal. Okay. So this is what I get. Now, over here, according to this signal condition is being tested over here. Okay. In signal में ये दोनों check करता है if it is greater or it is lesser. If it is lesser, it gives the value to signal as bearish. And coincidentally over here, we have got a bearish value. SMA 5 is actually lesser than SMA 20. Okay, and you can see over here. So it's seen a bearish. Now, the next thing is that after I got a bearish signal, okay, now there'll be more concerns over here because yeah, this strategy workflow, as I said, this is off market hours, this is putting together the pieces of the puzzle. But there will be certain things which we need to understand is that in this workflow, things will move together as in continuously through a while loop, data will keep coming. Then we will choose the signal. I mean, I will decide what the signal is depending on what our logic is. And then we choose an option. And not one option, this time we choose two options. Now, because we are looking for a bearish, we got a bearish signal, we are looking for a bear put spread. So I use the option chooser function. Okay. This option chooser function will help me choose the option. Now I'm not getting deep into this because we have already seen this. ये जो हमने पहले की है ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए उसको हमने एक फंक्शन में डाल दिया. So you can go into that and check out. And then finally, from the option chooser, we can choose one, right? But how do I choose the spread? सबसे पहले मैं देखूंगा what is the latest. So this data was for buying Nifty, okay, and my strike step I have put as 100. So I have to go for the 100 round figure, nearest 100 round figure. How do I do that? I see the last close divided by strike step. Okay, the nearest 100 round figure mein I got my ATM strike over here. Latest close was already defined through this, so aisa. And then using this, because I have to have a width of the spread, so I want कि मेरे को put लेना है और मुझे 200 पॉइंट नीचे का put बेचना है. So buy ATM put and sell 2 points lower ATM put. I've just explained you on the option chain how that looks like. Okay. When that is done, I will be choosing the bullish or the bearish leg. So if the entire thing is bullish, then it will choose the bullish legs. If it is entire thing is bearish, it will choose the leg in such a way that there is a bear put spread involved. Okay. Like in our case. In our case, what is involved? A long put and a short put. So long put is किया 26,100 का and short put किया 25,900 का. Okay. So this is an example from Nifty futures. I don't know why this was written as Bank Nifty over here. Okay. So this we are going to correct before putting it on the portal. Don't worry about that. Okay. So this is there.
And then ultimately you can have a order preparation. You can put the order. Now I'm not getting too much into the order because we are not into the live market. But overall the summary is that you have understood how to retrieve the 1 minute data for an index, then how to calculate the 5 and 20 period moving average, then how to generate a bullish or a bearish signal. Then after the bullish and bearish signal, you have understood how to choose the options. Choose the options according to the bull spread or the bear spread, whatever the signal is. And then finally we place the order. So this is the end-to-end example. Why I'm not showing you the order is because right now the market is closed. It will become a little bit confusing for those people who are watching this. All these codes will be put up on our Quantra portal as Dhan Notebook, the Dhan Notebook course, and the link to that will be available in a few days. Coming Wednesday, it will be available right in this YouTube description. I hope I'm completely clear. Okay. Now, before leaving, in the last step, I'll just show you how this happens to be a while loop. So there is a concept of while loop in Python. The entire strategy we can put in while loop by creating functions where we are fetching the intraday data, we are fetching the SMA signal, right? And then finally we are choosing the option and what to choose in terms of calls or puts, how to trade that, right? All this can be plugged together in a process which is happening continuously. For that we can use while loop. Here we have done while true, so it will perpetually run. And we are giving it a break of certain sleep seconds. So we can put, let's say, 60 seconds. So after every 60 seconds, it will check. So if you run everything like this over here, by and large, what is happening is you're fetching the data, you're generating the signal, you're choosing the spread to trade, and you're also executing the trade. So that way you will be able to execute your trade. So right now, just to make sure that this is not a strategy or then that's the disclaimer we have given in the beginning कि कोई strategy हम ऐसे नहीं दे रहे, advice नहीं है. So keeping that in mind, I'm not running this or I'm not showing the running of this. Okay. This is only for the demo purpose. So I hope it is very, very clear whatever I have taught today. Okay. So I'm just going to be taking some questions before I leave. Okay. Just having a look at certain questions. I hope everybody understood the session very well. कुछ चीज़ें हिंदी में हो नहीं पाती है बहुत डिटेल में क्योंकि जो लैंग्वेज है उस डेटा स्ट्रक्चर की पाइथन की उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल होता है सो आई एम फॉरगिव मी फॉर दैट बट आप इसको वापस से देख सकते हो और उसको थोड़ा धीरे धीरे पॉज करके देखोगे तो समझ जाओगे किस कोई कह रहा है गुड सेशन कोई कह रहा है दिस वाज अ गुड सेशन ऊपर से निकल गया आई नो इट कुड बी फॉर सम पीपल इट कुड बी लिटिल बिट you know tough to understand if you are a very very beginner in trading, but no problem. You have to spend some time with this session and the basic familiarity. यहाँ पर हमारा assumption ये है कि the people who are present over here, they have a basic understanding of what options are, what markets are, how to trade, what signals mean, what trading strategy means. Okay. So I'm really sorry agar I was not able to satisfy the curiosity of people who are absolute beginners, but this was our broader audience, like who know how to trade, right? So if you are very new, then I would say just brush up some basics and then you come back to this, or you can watch this slowly so you can understand this better. Yes, stop loss, target, orders, all of this can be worked around. But see, the point is over here not to give a strategy, right? The point is to show you how the pieces of the puzzle come together. And trust me, many people, when I started to learn coding, many people were like, how will you code if you're not an engineer or from a technical background? That is not the case. You can very much learn. I have been doing for many years now, and now it is very normal for me. And
you can figure if you sit with this for 1 or 2 days properly, or even may max to max 1 week if you're a beginner. If you sit with the content we will be sharing on Quantra portal, and we have the video already on YouTube, it will be there. Okay. You can learn a lot and you can automate a lot of things. Okay. From learning this, what are the next steps? You can backtest your strategies. You can learn by backtesting. You can improve your skills. Second is, if you have a strategy, you can apply that strategy. And although many things I have shared, but the, as you said, order modification or stop loss, target, those kind of things you can focus on also. Okay, those are things you can add. You can create a dashboard. You can create a scanner. You can pull data of multiple stocks at a time. You can create scanners in live markets. Okay, so there is a whole host of things which you can do. There is no limit to how you can creatively apply yourself. And we have overshot time a little bit, I know. Uh, Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I'm not taking too many questions now, but thank you so much. I see the relevant questions I've answered. Uh, you can put your questions or doubt in the comments once the video is uploaded here. And it was a pleasure catering to this audience. It was a pleasure to collaborate with Dhan. And we at QuantInsti keep striving to do better and better. On behalf of QuantInsti, this is Mohan Pachisia signing off. Take care. Goodbye. Thank you. Enjoy. Hi Mohak, that was an amazing session. Like, You've stopped it, kya? Live ka yes, time I hai? have